this computer. तो guys, the basic purpose of this getting is this, like काफी लोगों के सवाल आए कि कुछ बताओ इनर गेम के ऊपर, ये वो क्या करूं। कोई पूछ रहा था कि विपासना करूं, कोई पूछ रहा था मुझे कि इधर जाऊं क्या, कोई बोल रहा था कि ईशा का इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम करूं, या फिर ऐसा कुछ। तो भी तो यार, तो मैंने सोचा यार किस किस को क्या क्या जवाब दूं, एक एक को पर्सनली। तो मैं सोचा कि इसको रिकॉर्ड करते हैं, और रिकॉर्ड करके ही फिर इसको डालेंगे। And that's the purpose. I will share the screen and mostly will talk about regarding the beliefs and the other thing. But उसके पहले है ना, I would like to share you one experience, एक पर्सनल एक्सपीरियंस जो मुझे काफी चौंकाने वाला लगा। आई वाज लाइक, यार ऐसा भी होता है क्या कहीं। तो ये एक fictional scenario, guys. Type if you are able to see my screen, type yes, so that I will able to understand. The another thing is, अगर मेरा ऑडियो वगैरह सही नहीं आता है, काफी बार नेटवर्क चले जाता है, या हमारे अकोला शहर में नेटवर्क का बहुत इशू है। ओके, आई विल कीप दिस बॉक्स मिनिमम। ओके, थैंक यू। तो बिलीव्स के ऊपर वगैरह ही बात करना था, तो लेट्स स्टार्ट समथिंग विथ। तो उसके पहले भाई, दिवाली का किसी का कुछ प्लान, कोई किसी डेट वेट पे कहीं गया है? रिसेंटली अभी एक एलआर आया है इसका, आई थिंक सायन भाई का एलआर आया है। कुछ दिन पहले ही उनसे बात हुई थी। एंड अगर दिल्ली विल्ली में रहते हो आप, तो मिल लेना यार, बढ़िया बढ़िया पर्सन है सायन भाई, काफी हंसमुख इंसान है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। उसके पहले है ना, ये एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको। लगता है जूम का आदत ठीक से गिरा नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड है यार जूम। ओके, आई एम फ्रॉम दिल्ली। हाँ ब्रो, दिल्ली दिल्ली तो बहुत सही है। आ, दिल्ली इज गुड। सो गाइज, ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस था मेरे बूट कैंप से। ये दोनों जो बंदे हैं, ये ओरिजिनल बंदे नहीं है, चैट जीपीटी से उठाए हुए। और उनका नाम भी चेंज किया है, फॉर द पर्पस ऑफ द रीजन। प्रेस F5 बटन टू राज भाई, एक्सेस। आपका थैंक यू आवाज भाई। बहुत क्रैक हो रहा है, कुछ सुनाई। आवाज क्रैक हो रहा है? लेट मी चेक यार द साउंड। इकोइंग बहुत। नहीं नहीं, एक्चुअली हमें ठीक आ रही है। वो उन भैया की आवाज़ थोड़ी खराब आ रही है, उनका ही नेटवर्क अभी खराब है। अभी अच्छा, अभी आपकी आवाज अच्छे से सुनाई दे रही है, जो भी बोल रहा है वो। राज भाई, आप बोल के दिखाओ जरा, ऑडिबल है कि नहीं। ओके, फिर से बोल के देखता हूँ, देख बताओ यार क्लियर आ रही है या नहीं। क्लियर है, क्लियर है। क्लियर है ना? ओके, यस यस, अभी मुझे भी क्लियर आवाज। ठीक है ब्रो। ये दोनों बंदे हैं, ये दोनों बूट कैंप में आए थे। ये अजय और समीर। फिक्शन नाम चेंज किए रीजन से। लेकिन ऑक्यूपेशन और उनकी जो सिचुएशन है, ये जो बंदा है, ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रह चुका है। एक गर्लफ्रेंड थी, गुड विद सोशल सर्कल, और दूसरा था समीर, सिविल इंजीनियर था, और बुल्डाना से था। नाम चेंज किया है, बाकी असली नाम उनको पूछ के डालना पड़ेगा, और फोटो भी। तो हुआ ऐसा कि मैं बूट कैंप वगैरह लेना स्टार्ट किया था। एक सीन है बैंगलोर का, और दूसरा नहीं, एक सीन है मुंबई का और दूसरा है पुणे का। तो तब ये जो है अजय, इसका ऑलमोस्ट पहले से लुक्स, इन टर्म्स ऑफ लुक्स, मनी, स्टेटस, तीनों ऑलमोस्ट सेम ही थे। लेकिन ये अजय के है ना, सेट ही ओपन नहीं हो रहे थे। तो उस टाइम पे 10-10 दिन का बूट कैंप रहता था, और इसने 4 या 5 दिन तो मेरा पूरा दिमाग खा लिया एकदम ओपन करने के लिए। दूसरा था ये समीर। अब ये समीर का ऐसा था कि इसने है ना मेरा रियलिटी हिला दी। ये आया, इसने आई थिंक इसे ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट एंजाइटी हुई, उसके बाद में ओपन पे ओपन, ओपन पे ओपन किए जा रहा है। और इसको वो इश्यूज ही नहीं आए, रनिंग आउट ऑफ द थिंग्स टू से। बाकी हंसना, फन, बैंटर, वाइब, टीज, जो मुझे लगता है मुझे काफी टाइम लगा ये सब सीखने में। और बाद में सीन ऐसा हुआ इस बंदे का, तीसरे दिन मेकआउट हुआ। आई थिंक द प्लेस वाज नियर गुडलक कैफे के तरफ वो अंदर जो रोड जाता है वहां पे। और चौथे दिन एप क्लोज हुआ। फिर छठवें दिन इसका फिर से पूल हुआ, और सातवें आठवें दिन फिर से क्लोज हुआ।
तो मैंने पूछा भाई तू मेरा मजाक उड़ाने आया था क्या, तेरा गेम तो इतना अच्छा है। तो ही वॉज लाइक, अरे भाई मैं मुझे कुछ आइडिया नहीं था ये सब चीजें क्या होती है, गेम वगैरह पिकअप वगैरह। अम, कभी कुछ था नहीं, लेकिन मैं ये सब चीजें है ना अनकॉन्शियसली करता था। तो दैट वाज द रीजन। दूसरी तरफ ये अजय ये बहुत पढ़ के आया था, इसको ऑलरेडी अवेयर था ये गेम से, ये 2 साल से गेम कर रहा था। फिर भी आई डोंट नो, इसका प्रीवियस एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा था। एंड यार ग्रुप चैट ऑफ, इसमें यार कोई ऑप्शन रहता है ना कि डायरेक्ट मैसेज टू ओनली होस्ट किया जाता है ग्रुप चैट। ओके, ठीक है। तो अभी इनके सीन में सिचुएशन ऐसी है कि ये जो पर्सन है इसका, जब ये मुझे मिला था तब से ये थोड़ा सा बकचोद था, हंसता काफी था, काफी इसको वाइब भी काफी सही था। और इस पर्सन का भी स्टार्टिंग में तो समझ में नहीं आया ऐसा क्यों है, बट लेटर ऑन ये एक चीज हुई उसके साथ। आई थिंक द स्क्रीन हैज, गाइस यार मैसेज करना अगर स्क्रीन अटक गई है तो। Yeah, bro. Strange stuff. स्क्रीन हैज स्टॉप। ओके, तो ये सीन हो गया दोनों में। और Are you talking about Ajay? आ रहा है, हाँ अजय। अजय ने कुछ नहीं किया 10 दिन में, एज लाइक ऑलमोस्ट बहुत ही हेड में था, बहुत ही इंटेलेक्चुअल सवाल था, लेकिन काफी वेल रेड था बंदा। एटलीस्ट सब पढ़ के आया था, मिस्ट्री मेथड पढ़ के आया था, रॉस का प्रोग्राम देख के आया था, और गेम में भी काफी एक्टिव था। तो द पर्पस इज लाइक, इट्स व्हाई इज इट दैट सो। अगर ऐसा है, ऐसा होता है तो लाइक लेट मी नो योर व्यूज, यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स। तब तक मैं इसको बंद करता हूँ, तुम चैट बॉक्स में टाइप कर तो दो। एक छोटा सा कंफ्यूजन है इसमें। राज भाई एक छोटा सा कंफ्यूजन। बोलो। जिसने पुल पे पुल किया वो समीर या फिर राज? क्या क्या बोला, सुना ही नहीं दिया सिद्धेश भाई। जिसने पुल पे पुल किया वो समीर था या राज था? क्योंकि यू सेड कि उसने आके बोतल में बहुत दिमाग खाया, राइट? और वो दिमाग खाने के बाद लाइक बहुत सारे सवाल पूछे और एक भी अप्रोच नहीं कर पाया, फिर बाद में जब पुल किया तो कंटिन्यूसली पुल पे पुल के, दैट्स व्हाट यू सेड। तो वो समीर ने किया या फिर वो जो दूसरा था उसने किया? नहीं नहीं, सिविल इंजीनियर था ना पर्सन, जो हाँ। सिविल इंजीनियर था। फिर से शेयर करके देखता हूँ यार, ये पर्सन, ये वाला समीर, इसको कोई एक्सपीरियंस नहीं था, डायरेक्ट आ गया था। इसको ये भी नहीं पता था कि गेम क्या होता है, पिकअप क्या होता है, कोल्ड अप्रोच क्या होता है। बट इसको इसको इतना थोड़ा आइडिया था कि यार ये कुछ लोग हैं बाहर जाते हैं, स्विच ऑफ द वॉइस ऑफ अदर पीपल, इट इज डिफिकल्ट टू लिसन। यस ब्रो, वही कर रहा हूँ। सिविल इंजीनियर था, जीरो एक्सपीरियंस था, लेकिन बंदों में काफी अच्छा था और काफी सॉर्टेड पर्सन लगा मुझे। वैसे तो दोनों ही सॉर्टेड थे, लेकिन ये थोड़ा सा पता नहीं, ये भी एक्सट्रोवर्ट ही था, लेकिन बूट कैम्प का आने के बाद क्या सीन हो गया क्या पता नहीं इसका। एनालिसिस थ्रू ओवर पैरालिसिस, पैरालिसिस थ्रू ओवर एनालिसिस कह सकते हैं इसको। इसका ये सिचुएशन काफी, सर आई एम गोइंग माय हेड इन द वॉर थॉट्स, ठीक है क्वेश्चंस बाद में लेंगे। तो अब ये ऐसी चीजें इसलिए होती है ब्रो, क्योंकि बहुत से लोगों के इनर गेम के जो, अरे यार शिट, जस्ट अ मिनट यार, कांड मैं में। कुछ बोलूं? यार नया नया वो अभी सीख रहा हूँ ये जूम वगैरह, बहुत ही दिमाग खराब होता है इसमें। तो ब्रो गूगल मीट पे कर लेते हैं आप. I think it's very convenient for you to आखे, take. Yeah. चलो हो गया यार, इसको ज्यादा। तो भाई लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इनर गेम, उसके बाद में मैं मेरे बारे में बताऊंगा अगर कुछ लोग नए नए हैं तो what I have seen up till now, when the average guy comes into game, he has a lot of struggle, and when the good guy comes into the game who is very emotionally sorted, then for him the game becomes fun, game becomes easy, and it's always amazing something for him, especially when it comes to uh, whether you go for coaching, teaching, or you try to self learn about by yourself.
एक सवाल हमेशा होता है जब हम कभी भी स्टार्ट करते हैं, तो लॉट ऑफ गाइज आस्क लाइक, ब्रो व्हाट अबाउट द रिजल्ट्स, हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू गेट रिजल्ट्स। तो ब्रो उसके ऊपर बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स होती है जो बोलते हैं कि कम टू दिस प्रोग्राम यू विल गेट 100% रिजल्ट्स। और मैंने भी काफी ऐसे प्रोग्राम्स खरीदे, मेरे भी कम से कम अब तक $100 तो गए ही होंगे ये देखने में, क्योंकि एक फुद्दू सा कहीं तो भी वीडियो आ जाता है कि वी हैव लर्न दिस टेक्निक ऑफ एफबीआई एंड दिस टीचर्स यू द सीक्रेट साइकोलॉजिकल, नो मैटर हाउ अगली यू आर, हाउ फैट यू आर, हाउ इडियट यू आर, हाउ डम यू आर, यू कैन स्टिल गेट लेड विद 9 and 10 लेफ्ट एंड राइट। एब्सोल्युटली बुलशिट प्रोग्राम्स रहते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, ट्रस्ट मी, इट्स लाइक अ मार्केटिंग गिमिक। तो अगर 2-3 साल बाद मैं ऐसे वीडियो बनाऊं यूट्यूब पे तो मुझे गाली मत मारो, दैट्स अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट वाइजली, because those things really do have certain count. I'm not saying it's everything, but it is 1 or 2 parameters of 10 parameters, and definitely it gives you more leverage as compared to outsmarting your competition, and we live in that competitive market now. When it comes to result, एक लॉजिकल और प्रैक्टिकल सिनेरियो बता दो। ये ये जो है, ये तीन लड़कियां है, ये लड़की है, इसका की वजन है 35 kg, इसका है 50 kg, और इसका है 150 kg। इसको मैंने बेस्ट कोचिंग दिया, डाइट दिया, फिटनेस दिया, हेल्थ वेल्थ सब, प्रैक्टिकली इनके ऊपर 1 साल तक काम किया। 1 साल के बाद अगर देखा जाए तो इनके टेंजिबल रिजल्ट्स, जो 35 kg की थी, जो 35 kg की थी, उसने अपना 5 किलो वजन कम किया, सॉरी 5 किलो वजन बढ़ाया। जो 50 kg की थी, उसने सिर्फ 5 किलो कम किया, और जो 150 kg की थी, उसने 120 kg कम किया। ऐसा क्यों? लेट मी नो द आंसर इफ यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स। सर कैन यू रिपीट? तीन लड़कियां हैं, देर आर 3 गर्ल्स, दिस इज गर्ल who has a 40 kg of weight, okay, this is the girl who has 35 kg of weight, who is very skinny. she is she is a medium looking girl, she has 50 kg of weight, and she is the third one, she is super chubby. C, she has 150 kg of weight. So 1 साल तक सब डाइट, फिटनेस प्लान, ये सब वर्कआउट किया, ट्रेनर हायर किया, जिम में भी तीनों ने हार्ड वर्क इक्वल किए, किसी ने थोड़ा बहुत कम ज्यादा किया, बट ऑन द अप्रोक्स it was exactly similar and equal. Then why the results were so different? Their individual lost weight, yeah, right. और the individual decision to gain or lose weight. गेन और लूज वेट का ऐसा है ब्रो कि ये जो है, इसने सिर्फ 5 किलो वजन बढ़ाया, सॉरी कम किया, सॉरी बढ़ाया। इसने जो है ये 50 kg, इसने सिर्फ 5 किलो घटाया, और इसने प्रोग्रेस किया, लगभग 30 kg से रिड्यूस किया। फिर भी जब विजुअल में हम 1 साल बाद देखते हैं तीनों को, तो उनका बॉडी शेप कुछ इस तरह है। जो है 35 kg की, वो 40 kg तक आई है, और जो 50 kg की थी, शी लुक्स लाइक अ स्टनिंग हॉट मॉडल। इसने 5 kg सिर्फ रिड्यूस किया है, इसने 5 kg इंक्रीज किया, और इसने 30 kg रिड्यूस किया है, लेकिन दिखने में एट द वेरिएशन, एवरीवन स्टार्टिंग पॉइंट वाज डिफरेंट, राइट, एवरीवन स्टार्टिंग पॉइंट वाज डिफरेंट। और बिलीफ, कह सकते हैं यहाँ पे फिटनेस में इतना ज्यादा रोल प्ले नहीं करता, फॉर दैट यू कैन गो फॉर जेफनी पार्ट। इनर मोटिवेशन टू चेंज लुक्स, नहीं नहीं, मोटिवेशन की बात ही नहीं है, तीनों ने बहुत कस के मेहनत किया है, अप्रोक्स तीनों ने सरी का मेहनत किया है, कोचिंग भी अच्छा था, डाइट भी अच्छा था, सब कुछ। सर बॉडी टाइप पर डिपेंड करेगा। बॉडी टाइप पे डिपेंड करे, मैं तो फिटनेस कोच हूँ नहीं भाई, कौस्तुभ है तो कौस्तुभ को ज्यादा आइडिया रहता है इन सब चीजों का, बट व्हाट आई सी इज, अकॉर्डिंग टू जितना मैं आजकल स्टडी कर रहा हूँ, जेफ निपाड वगैरह देख रहा हूँ, तो काफी समझ में आ रही है चीजें। सो दे से दैट द जेनेटिक्स प्लेज अ बिग रोल, और ऑफ कोर्स देयर स्टार्टिंग पॉइंट was a very differentiating factor in that starting point. The same applies with this thing, game. Now if you see these two guys, ये भी कोई आर्टिफिशियल फिक्शन सिनेरियो है। ये एक लड़का है
जो शाय है, इंट्रोवर्ट है, पुअर सोशल इंटेलिजेंस है, पुअर पेरेंटिंग कंडीशनिंग भी बहुत खराब रही है, ओवरवेट है, नर्ड है, लेस एक्सपीरियंस है विथ वुमन. सो हिज बिलीफ, हिज माइंडसेट, हिज बिलीफ्स आर ऑल रॉन्ग, क्योंकि जितने भी एक्सपीरियंसेस आए हैं, रेफरेंस एक्सपीरियंसेस, वो सब अब तक गलत ही आए हैं. नाउ ये एक दूसरी तरह एक बंदा है, ही इज एक्सट्रोवर्ट, गुड सोशल, अब तक पेरेंटिंग, फैमिली कंडीशनिंग, नर्चरिंग, ये सब अच्छा रहा है. नर्ड तो बिल्कुल था नहीं, आउटस्पोकन था, एंड हैव गुड एक्सपीरियंस विद वुमन. नाउ दिस गाय, नाउ इमेजिन दैट बोथ guys come into the game, pick up and cold approach and try to be good with women. So इसके बिलीफ में, इसके रियलिटी में जल्दी क्लिक होगा, बट इसका मतलब ये नहीं है, बट हिज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस इज मच मोर एज कंपेयर टू हिम. ऐसा होता है कि जो बच्चे लोग होते हैं उनको काफी जल्दी चीजें पकड़ में आती है. बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं, जैसे एक था रनिंग आउट ऑफ द थिंग्स टू से. मेरा एक बहुत पर्सनल इशू रहता था 2018-19 में, जब मैंने पहला बुक कैम्प किया था. आई विल टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ, लाइक हाउ आई केम इनटू गेम एंड लाइक हाउ व्हाट लेवल ऑफ एक्सट्रीम लेवल ऑफ शिट आई डिड. बट coming back to the point, this guy will really kill the game. Now that doesn't mean, I'm not saying that this guy can't get anything, of course, but for him there will be a massive level of struggle for him because his belief filters are wrong. Now there are certain concepts in game. One is called, like, the, if you will read a lot of red pill, black pill, if you are new in this game and other thing, I would suggest you read Rational Mail, read, you can watch Hamza, you can watch that Richard Cooper. Those are like red pill guy, like personal development, bodybuilding, and other things. I don't discard all those things, but trust me, I know people who have been student. They have amazing body. I know a lot of people in my gym when I was working, when I was doing workout in the gym. तो एक बंदा था, मैं और राघव घूम रहे थे, उसका इतना खतरनाक बॉडी था. उसको जब पूछा, सब उसको ताड़ ताड़ के देखते थे, तो उसको जब पूछा तो बोले कि भैया, तो मैं तो अब तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही, वर्जिन हूँ. मेरे यहाँ मेरा एक दोस्त है जिसका बहुत अच्छा बॉडी है, वो बजरंग दल का अकोले का बहुत बड़ा लीडर है, एंड ये बहुत अल्फा बैड बॉय है, लेकिन ही इज एब्सोल्युटली जीरो विद वुमन. So body is one of the factor out of 10 to 15 factors. Looks, money, and status, I'm not discarding that value. They do play a role, but it is very limited. So don't rely everything. So looks maximizing का ये concept है. So if you can work at least at the starting point of level, you can work yourself, at least get some basics sorted. Then as you come into the game will become little easy for you. Otherwise, but don't get into that level of thinking कि पहले 5-10 साल, 10-15 साल पैसा कमा लूं, 3-4 साल में जॉब सेटल कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, क्योंकि मैंने वो सब कुछ किया है. मैं 2012 से 2018-16 तक, जब तक गेम नहीं पढ़ा था, 2016 तक, 16 में मैंने द गेम पढ़ा था नील स्ट्रॉस की. उसके बाद में मैंने दो 16 से 18 तक पागल साइंटिस्ट जैसा रिसर्च किया. I had body, I had money, I had looks, and I was in the best college, MIT. Nines and tens were around me, and I never dated a girl in college. Because, हाँ, ऐसा नहीं कहता हूँ उन चीजों की मदद नहीं हुई, उन चीजों की काफी मदद हुई है. Because it helped me to get friendships, it helped me, because you have, at the end, you have a value. People come to you. Women used to come to me for a lot of things, not for sex, but definitely as a friend, as buying the ticket. I made a lot of female friends, which I never had. That was the advantage that I got through a lot of personal development. But still, you need game. It's not that you won't need game. So then 2018 mein I took my first boot camp. I won't take his name because he's a very big shot guy now, but let's call him, he's a very good seducer and I very have a respect for him. So उस टाइम पे 15,000 रुपए देके इधर उधर से कैसे तो भी 2018 में पहला बूट कैम्प किया था, 2000, एंड 2-3-4 महीना जब गेम किया, तो आई स्टार्टेड गेटिंग वन थिंग. नो ब्रो, इट्स नॉट दैट. हाँ, जिसका नाम लिखा है वो, उसका भी कोचिंग लिया है. बट आई स्टार्टेड गेटिंग एटलीस्ट 3-4-5 months जो चार्जिंग किया. आफ्टर चार्जिंग आई स्टार्टेड गेटिंग लिटिल बिट गुड. ओके, आई अंडरस्टैंड, लाइक इतना भी अगर मुझे आता था बेसिक लेवल पे, तो कॉलेज में मेरा कुछ तो भी हो सकता था, बिकॉज लॉट ऑफ लिमिटेड प्री कंसीव नोशन भी थे. सी, इनर गेम इज अ बिग बिग
big topic. And you have to understand, you don't need to get enlightened to have sex, to date a girl, because, but you need to be little stable. I'm not saying you need to get emotionally 100% sorted. No one is, neither you, neither me, neither the guys who are having amazing results, and neither anyone. Everyone has certain issues and certain problems in life. So don't try to get it extreme level, because I have tried that extreme level also, and it sucks and fucks everyone very badly. So coming back, uh, you can try and invest like 5 to 6 years, but after coming to the point, you will see that you are still same the person. I know a lot of like, I have 5 to 6 students. Ek Rahul hai, and Rahul is very good. He regularly gets lot of closes from Tinder, Bumble, and lot of other things. And you know, he has a body, but he still needs the game. So of course, and when he came to me, I met him through Costco only. So he already had 12 to 13 plus closes, but in a small town where he belonged. So there was no competitive market. Then he came to the Bangalore and he started telling me, यार कुछ नहीं हुआ भैया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ. And आप बता दो राज भैया, ऐसा ऐसा ये वो. And trust me, even the verbal is not at 9th and 10th level. Basic verbal, unless and until he is making some serious mistake, he gets results easily. So I am not discarding the value of body, but it is one aspect, because सिर्फ body के basis पे उसको कुछ नहीं मिला. There is another guy who has a very good body, who has very rich, who has a good status and everything. I can calculate like 7 to 8 students who are 10 times better looking than me, taller than me, richer than me, career stable than me, and they're still virgin. So get that point clear in your head. Looks, money, and status are 1, 2, and 3 factors out of 10 factors. Major factors are different. So don't get into that black pill thinking कि वही है तो सब हो जाएगा, नहीं होगा. And that all comes is looks maximizing. आपको थोड़ा बहुत करना चाहिए, but don't get too much into it. Too much into it can hamper you, seriously hamper you. भाई रिग्रेट होता है. निर्णय नहीं ब्रो, निर्णय you need to solve your game verbally in a very strong way. You will skyrocket later on. Coming back to the point, because Q&A हम last में लेंगे, and we will short up, wrap up very quickly, because दिवाली है, काफी लोगों को जाना है. This is something about me. So I come from a family of professors and doctors, very spiritual people, very culture oriented people. I come from a small town of Akola. I was there in Pune, Nagpur, Delhi, and Bangalore, and Mumbai on and off in between. And 2016 में I did my first boot camp from one of the famous coaches. Right, अभी बहुत famous हो गया है. And in the entire boot camp, I did only 3 opens. 2016 से 2018 तक I used to sit like a mad scientist and read like ample of books. लाइक 5-5 6-6 घंटे लाइब्रेरी में बिठा के सिर्फ पढ़ते रहता था. ये पढ़ो, वो पढ़ो, वो पढ़ो, ये पढ़ो, ऐसा वैसा ये वो. एंड ट्रस्ट मी, नथिंग हैज हेल्प. आई यूज्ड टू लाइक अ गाय, लाइक कुछ नहीं करना है, नो फन, नो एंजॉयमेंट. Guys who have lot of, who always remain inside the head, who don't have cool, calm, composed attitude, they have got addicted to their struggles. Don't get addicted to your struggles. If you have been addicted and attached to your lot of struggles, you won't be at ease. A person who is at ease, who is at relax, is likely to get more things rather than a person who is like करना है, मेहनत कर, पसीना बहा, रुकना ना, थकना है मना. हमारे दिव्य ज्योति भाई थे, उनका उनका स्लोगन ही वो था, कभी भी रिलैक्स नहीं रहते थे. बट फाइनली ही आल्सो गॉट, thanks to he worked on lot of other things. So if anyone is in Hyderabad, दिनेश भाई है, और दिव्य ज्योति भाई है, उनसे कभी मिल लेना. Amazing people. So coming back to this point, in that 2 years of duration, I did 5 boot camps. I think 4 or 5 boot camps, took 4 mentorship. Overall, up till now, I took 6 boot camp and 5 mentorships. Invested like around 3 to 4 lakh rupees. You name the best coach in India, I haven't taken and learned from it. Almost all of them. So I
no in and out, 2 years. I think it has been like around 7 years right now in game, and this invested a lot of time, 2 years. And trust me, when it comes to job, career, and other things, everything was solved. I won't say that in my life, I didn't try to figure it out. I tried to sort a lot of things. Satish said, I'm a software engineer. I'm very logical because of that. I'm always inside my head when gaming, trying to think, try freestyle. And there are a lot of exercises like this, like this, like this, like this, like this, and a lot of exercises are there which automatically takes you out of the logical mind. We will talk in the Q&A session later on because switching away from the topic. And anyone after the it's like after that, message me, call me. I'm there till 6 or 7. We can have a conversation. So coming back, 2 years, I got nothing. I used to game like around Monday to Thursday after office, 3 to 4 hours daily, from 9 to 11:30 or 12. When the office hours were strict, from 10 to like around 1 a.m. to Korega Park, Balewadi High Street. At that time, I was in Pune. I used to pay one coach like 500 rupees a daily charge, and like this, that, a lot of things. And 2 years, the result was ZDRO 0. Coming back to the point is like the inner game was mentally fucked up, mental issues. And the interesting thing is like my coach used to say, bro, assume that she already likes you. When you go and compliment her, she will like you. और मैं बोलता था, लेट्स टेक हिज नेम मिस्टर वाई. तो मैंने, अरे भाई, कैसे इतने खूबसूरत लोग हमारे खानदान में दूर दूर तक नहीं है. सब हमारे खानदान में सब छोटे नाटे और आई लुकिंग है. हमारे पूरे दूर दूर के समाज में मैं ही सबसे हैंडसम हूँ. यू नो दैट वाज द थिंकिंग. सो हाउ वुड आई assume that someone is that if I'm going to go and compliment else, because there was lot of negative filters in my unconscious or subconscious or anything you call it. क्योंकि आजकल हाँ, राजीव शर्मा, you are right. Who is that? That is the person. So when it comes to inner game journey, I will tell you, lot of scam is there, lot of shit is there. I will tell you a lot. See, inner game is a very very huge subject. The only thing is I'm trying to put certain example of it what I have done. I'm not recommending you कि like ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, ये कर लो, because different practices suit for different people. It's not for a lot of people ask me about vipassana. See, for some people vipassana is a wonderful practice, but for some people it's extremely dangerous. You know why? Because the reason is, एक तो बोलने की वो कला है. 10 दिन आपको कुछ नहीं बोलना पड़ता है. ऐसा ना हो जाओ कि आप पहले से इंट्रोवर्ट थे, वहां जाने के बाद में आप जितना थे उतना भी नहीं बोल रहे हो. सो different practices work for different people and can't be said like यही कर लो. Coming back to the story, so these are certain festivals and programs I have attended, and these are the certain experiments I did with myself. I learned NLP from Sajan Gilani, sorry, Sandeep Gajjar, which was in Sneha Desai's team. It was like 4 days of workshop. Then I learned hypnotism from one of the coach. It was like around 2 to 3 days ka workshop. Art of living, I got massively addicted to art of living. So I used to spend lot of time there, and I used to fuck myself left and right there because होता ये है कि after a certain period of time you get a very good feel good factor, and you have that duality. Oh, sex for me is bad because certain spiritual, the leader of art of living might be saying that it's wrong to hook up, it's wrong to have sex, it's wrong to they prefer monogamy. Because I do understand their point of view, because they have to keep those words like that. The reason behind that is because they target the masses. So don't get into those level of thing. Then what are the topic? What was the topic about him? And then I started doing and then I went into Vipassana. I learned from one of the coach because every top-notch PUA was going to Vipassana, and Vipassana, the name of Vipassana was mentioned in the book by Neil Strauss also. So I thought maybe this is something interesting, and the David D'Angelo also once a time mentioned about a lot of things about Vipassana.
जेम्स मार्शल वॉज देयर. सो जेम्स मार्शल डिड 11 टाइम्स विपासना. तो मैंने भी सोच लिया मुझे तो 11 बार करना ही है, मुझे अपना इनर गेम सॉर्ट करना है. सो लाइक 13 times. Then I did inner engineering because I was highly impressed by Sadhguru's talks and lectures. Brahma Kumari meditation. If you are in game, then definitely no. I would never recommend it. Mahasmani Shbir by Sir Shri, and I also did ISKCON. No, because lot of sexual taboo. Matlab, if you are in sexuality, it's like, see if see it's like a dual thing. That I went to Ramakrishna Mission, ISKCON, Swami Narayan. The culture there is very hardcore brahmacharya oriented. So if my manager used to tell me that if ethics is your issue and you're in the job of marketing, you will have a very hard time to sell. And that's the reason. If you practice certain organizations, certain spiritual organization for whom the sexuality is a huge taboo, then you will always in the duality of conflict. मैं करूँ या ना करूँ, is the sex definitely keep ingrained in your mind. That this is what I regularly say to myself. I love money and I love women. I love sex and I love sales. Both the things are important because these are certain blocks that creates a huge obstacle in game. Guys, clear? Type clear if everything is if uh, if I need to proceed it further. Okay, can you repeat it? Clear MPA. Okay. No, guys, I don't like calling myself as an MPA. भेजना लाइक ऐसा बहुत अजब लगता है यार. मैं कभी कभी रोड पे घूमता हूँ और वो एकदम कोई आता है, राज ब्रो यू आर अ पिकअप आर्टिस्ट ना. अरे मैं बोला यार कुछ अच्छा बोल. आई नेवर क्लेम दैट. आई जस्ट क्लेम माई सेल्फ एज अ गुड लर्नर एंड what I have learned I can teach that. I do believe so. And obstacle is certain blocks that hold you. Now we will proceed further. Now, I hired a lot of counselor, therapist. I went through certain therapies because मुझे ऐसा लगता था inner game needs to be fixed, inner game needs to be done, and inner game is a big topic. And of course, definitely, as a person, you must work on your inner game. Now, the another thing I tried was various different meditation from various organization. I'm not still remembering क्योंकि एक ऐसा भी टाइम था कि मैं 5-5 6 6 घंटे वहां पे बैठा रहता था और किसी कभी इससे बात कर लूं कभी उससे बात कर लूं. Lot of chaos. EFT is a wonderful technique. You can try that. I have learned it from Pradeep Pawar and Minal ma'am. And I used to write a lot of protocols. I still do write a protocol. So one of the protocol was, so this is one of my protocol sheet. Anyone is looking, I can definitely send them. Uh, so it's like there are 5 type of emotions. The emotions are related with, but you can only go to him if you understand Marathi because his all target segment is Marathi. So that one is fear. Fear is the emotion. So following are the reason. At the level of fear, I have certain. So I had a lot of fears: fear of getting beaten, fear of getting caught, fear of not getting liked, fear of getting rejected. Lot of. So I used to write all those fears in this protocol list, and there were certain points that need to be tapped. And then there was another fear regarding lack. Lack. What I lack height, I lack money, I lack this, I lack that, and then there was another type of emotion that was limiting belief that is coming from my previous past experiences. Then there was another anger, jealousy. Lot of things are there. Anger and jealousy, hatred towards the people who are better than me, who are 10 times more amazing than me, who are getting a lot of success without any efforts. Okay, can you repeat affirmation you did on that? Affirmation is I love money and I love women. I love sales and I love sex. It's simple. Affirmation list, message me on the group or message me personally. I will send you my affirmation list also. It is there. You can have it. Then the other was genetic triad. Genetic triad holds a lot of people back. Uh, there was one genetic triad. If you have any bad mark on your face, or if you have certain disability, if you have met some with an accident, and then it will be a problem to you. Then if it is coming from your genetics, so for example, me, my genetic was like
People are not believe in that polygamy and other things. They are very simple and humble and ground to earth people, and they don't believe in all those things. And people in my family still do believe that the woman who wears short skirts or smoke cigarettes or have drinks are basically a professional prostitute, which is not true. Never judge the woman. If you are going to judge the woman, you are not going to sleep with the woman. Okay, guys, clear? If it is clear, please do message me. Guys, clear? Please type yes, no, something. Okay, anything. Clear. Okay, you means belief. Yes, beliefs do play a major role, and we will talk how the inner game, outer game, and structure game parallelly comes into. Then I tried a lot of yoga also. I thought maybe emotions are related. Emotions are getting suppressed in certain body elements. Then I did param sadhana. I attended a lot of workshops, courses, lot of coaches. Whether it is Sneha Desai, Coach BSR, Dev Advi, दर्शन सोमया, lot of people यार. At least जो दो दो तीन तीन दिन के कर रहे थे तो वो तो मैं सभी कर लेता था. Most specifically the free ones. Of course तो free तो मैं कभी छोड़ता नहीं था. Lot of workshops I did, lot of seminars I did, and to some extent everything helps. It's like whatever you learn, ध्यान, ज्ञान, कर्म और सेवा. मैं टीचर से वो कभी वेस्ट नहीं जाता, लेकिन उसका फल आपको आपके हिसाब से नहीं मिलेगा, लॉन्ग रन के हिसाब से मिलेगा. और उसका फल आपको कब मिलेगा, you don't know. Then I thought maybe I have screwed and fucked up my mentality a lot to sort my inner game, and I'm not still getting any results. Then I thought I must experiment something different. So when it comes to experimenting myself, like I did a lot of other things also. These are certain workshops and seminars I attended. बहुत ज्यादा है, बहुत चीजें लंबी लंबी है. पिक्चर तो मेरे एक टीबी का पूरा हार्ड डिस्क है. दीज आर फ्यू पिक्चर्स. सुबह सुबह बैठा था तो जो मुझे लगे वो मैंने डाल दी. And the various experiment, like when it comes to inner game, I like read like around 50 plus books. There is one my Instagram page, Read with Raj. Read with Raj, RAAJ. I have mentioned all the list of books that I have read. Like it might be around like 250, 260. And in that section, I have also shared like which are the things, which are the topics of the books. You can go through it. And I have given the rating also कि इसमें से कौन सी बुक को क्या रेट किया है. लाइक सर्टन बुक्स लाइक इमोशनल इंटेलिजेंस इज बुलशिट. कोई फायदा नहीं होता है उसका. मैंने काफी पढ़ा है. पावर ऑफ नाउ इज गुड. एंड देन लॉट ऑफ अदर बुक्स. टिचनैथ है. ये सब करना जरूरी है? नहीं, नहीं ब्रो. समवन इज आस्किंग मी क्या ये सब करना जरूरी है इनर गेम फिक्स करने के लिए? नो, नेवर. क्या? सी ब्रो, like lot of people is like, it's like trial error, trial error, trial error. It's like that. For some people it's like that. A lot of people, for example, I want to learn business coaching. Right now I'm learning business coaching from Siddharth Rajshekar. Will I go and चलो मैं एनएल ये भी सीख लूं, मैं वास्तुशास्त्र भी सीख लूं, मैं ये भी सीख लूं, मैं रिकी भी सीख लूं? नो. I am already in the niche. I just need to know how do I scale up myself in this market of coaching industry right now. Do I need to? ये सब करने की जरूरत नहीं. This is what I have experimented when I was trying to fix my inner game. This I am telling you my various other experiments that I did. Conversation with various master. Then I heard like बहुत से लोग हैं जो बड़े बड़े जो पावरफुल लोग हैं वो मॉन्ग लोगों के साथ में भारत के भ्रमण यात्रा पे जाते हैं. तो मैंने भी ऐसा बेवकूफी किया. मैं दो दो तीन तीन महीना पैदल चला अलग अलग मॉन्ग्स के साथ में. एब्सोल्युटली नॉट नेसेसरी दैट वन शुड डू. लिविंग एट वेरियस प्लेसेस. किसी जगह की किसी लेवल की एक पावर होती है, उसकी एक एनर्जी होती है. ऐसा होता है, वैसा होता है, वो भी है. I'm not saying that all those things doesn't help. Sometimes it helps. ना किसी ने बोला मुझे सोलो ट्रैवलिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो, वो भी किया. फायर वॉकिंग, फायर ईटिंग, नीडल घुसाना, ये करना, माइंडफुल. lot of things are there. Lot of things are there. Lot of things are there. Inner game is not something, and you don't need to. We need to just sort certain things. That's all.
और ये ऐसा नहीं है कि 2 या 3 दिन में मैं पूरा आपको इनर गेम बता दूं. When it comes to inner game, it requires a time. It requires a time. Out of which is useful and remove trauma. नहीं ब्रो, ऐसा नहीं बोल सकते. इसके लिए पर्सन को जानना पड़ता है. Different practices. No, my story is not. Truth with someone is saying your story is so similar to Neil Strauss. Neil Strauss grew up very fast, but yeah, of course, उसने काफी चीजों पे काम किए. And he was a writer, bro. People have to understand. See, on the other side, I used to seeing other guys जिनका गेम ठुका पड़ा है, कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं करते हैं, but still they are getting left and right. I will give you example. Like I was like around 1.5 year मुझे हो गया था और मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था गेम से. साला मैं ये सब कर रहा हूँ, मैं एक एक चीज लिख रहा हूँ, मेरी ऐसी जर्नल्स भर रही है, मैं ऐसे 3-3 4-4 जर्नल लिख रहा हूँ कि ये करूँ वो करूँ. दिस आई यूज्ड टू राइट. मैं हैंड राइटिंग एनालिसिस का क्लास की हैंड राइटिंग का भी बिलीफ से कोई लेना देना है, ये है वो है ये है वो है. एंड यू नो देयर केम अ पॉइंट इन माय लाइफ आई यूज्ड टू सी समवन हु इज डूइंग एब्सोल्युटली नथिंग एंड ही इज गेटिंग लेट. इट यूज्ड टू पिस मी सो मच कि भाई मैंने क्या गलत किया है, भगवान मुझ गरीब आदमी पे इतना निर्दलीय क्यों, मतलब इतना इतना मेरे साथ में अन्याय क्यों. And trust me, lot of time it used to happen that certain guy who is doing a shit level of game, even if he doesn't know anything about game, lot of people in my college, lot of people in my social circle, when I used to see that, अरे क्योंकि मैं तो बहुत well read, I have studied a game like a mad scientist, like Albert Einstein, and definitely from 2016 to 2018. तो मुझे सब समझ रहा है, ऐसा ये वैसा ये. और मैं बोल रहा हूँ ये बंदे ने फ्रेम लूज कर दिया, ये बंदे ने ये कर दिया, वो बंदे ने. गेम का भी अपना ईगो होता है. आई नो इट, आई नो इट, आई नो इट. ये ऐसा होता है. बट भाई हकीकत क्या है, हकीकत घंटा कुछ नहीं है. ये बातें ऐसी होती है कि वो ऑथर होता है ना सदाशिव पेट में, वो पब्लिकेशन हाउसेस है, किताब लिखते हैं, दुनिया में मिलीनियर बिलीनियर कैसे बने ले, और जेब में 10 रुपए नहीं रहते चाय पीने के लिए. वैसी हालत हो गई थी मेरी उस टाइम पे, 2018 से 2016 से 18 तक. सब कुछ दिमाग में समझ रहा है, वो कुछ नहीं रहा. और दूसरी तो वो लोग देख रहा हूँ जिनके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स व्हेन इट कम्स टू गेम इज कंप्लीटली डिफरेंट. Bro, how much inner game is actually required? Can you tell me some pointers if you have techniques for sexual shame removal? Please share. Yeah, of course, bro. Q&A at the last. Save your questions. So I used to see other guys, and trust me, when it comes to मेरे लॉजिकल माइंड में दिमाग में वो चीजें फिट नहीं होती थी. यार ऐसा हो कैसे रहा है. नाउ यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट देयर आर टू एस्पेक्ट. दोज गाइज जिनको कुछ ना करके भी मिल रहा है ना, दोज गाइज गेट रिजल्ट. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ गाइज. एक ये पर्सन है और एक ये पर्सन. इसको बोल दिया ब्रो कुछ नहीं जाना है, बस बकचोदी करनी है, ब्ला 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 ब्ला, यू टॉक दिस दैट 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 दैट. इसको दर 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 रिजल्ट मिल रहा है. और ये भी वैसे ही कर रहा है, बट इसके लिए उल्टा उल्टा काम कर रहा है. इट्स गोइंग नेगेटिव 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 नेगेटिव. फॉर एग्जाम्पल, like I will tell you, I'll share you the example of my fitness thing. When I was in fitness, मुझे एक फिटनेस कोच ने, बहुत स्टूपिड से फिटनेस कोच था, उसने मुझे बोला था अरे कुछ खाने पीने का ऐसा है नहीं, ये नहीं है वो नहीं है. मैं क्या ये भी खा लेता हूँ, और देखना मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं. मेरा रूममेट बोलता था अरे मामा मैं तो सुबह से भुजिया शौकी हूँ, देखो मेरा बॉडी. द रीजन इज, और मेरा तो वेट लॉस ऐसा होता है, ऐसा मेरा वजन बढ़ेगा बहुत लेट, वेट लॉस फटाफट हो जाएगा. The reason is my genetics, my body type is very different. So you have to understand. Like same applies with game. This guy was like killing. इसको verbals भी इतने नहीं रहेंगे. Inner game बहुत, कौस्तुभ का inner game बहुत अच्छा है. His like inner game is good. He doesn't think in terms of, he doesn't apply a lot of techniques, but he has a lot of conviction and gut feeling. मेरा माइंड वैसा काम नहीं करता है. आई नीड लॉट ऑफ मटेरियल प्रूफ, आई नीड लॉट ऑफ लॉजिकल फैक्ट्स, आई नीड लॉट ऑफ टेक्निकल थिंग्स टू स्पीक टू से. जब मुझे व्हेन आई वाज इन द बूट कैंप एंड लाइक कोचेस यूज्ड टू से भाई तू कुछ भी बात कर सकता है, तू कुछ भी बोल सकता है. तो मैं बोलूं क्या बोलो यार कुछ भी. यू नो आई यूज्ड टू ऑलवेज हैव दैट either this or that. मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ. आई एम अ सेंसिबल गाय, आई नो दैट.
मुझे जो चीज पता नहीं है मैं उसके बारे में कैसे बोलूंगा? सो फॉर मी इट वाज दैट थिंग. Shubham is saying audio issue. Guys, can other people answer if it is a audio issue? No, no, bro. Maybe you need to check from your side. Okay. Thank you, bro. Thanks for updating. And then I got massively frustrated when I didn't got any results. I was trying everything, inner game and this, that. Well, now you have to understand how much the inner game plays a role. Yes, of course, it plays a big role in game. Anyone who is claiming that inner game doesn't play a role is absolutely lying, bullshitting. Because as I have cleared you, certain people operate from certain thing. Call and meet you, sir. Yes, of course, you can call me and meet me, but later, not right now. The inner game, who plays a role? When I look at my cousins, everyone is dating, everyone is IIT, everyone is having amazing, and a lot of people, and a lot of my cousins are getting married. And trust me, if I tell them regarding the game and this pick up, this will like, भाई तू पागल है या जिंदगी में लोग पागल है जो तेरे से ये सब कुछ खरीद रहे हैं? You know, my father still says the same thing. ऐसे कौन से गधे लोग हैं जो आप तेरे से ये चीजें सीख रहे हैं? ये कोई सीखने लायक चीज है क्या? You don't understand. The situation at that time is different. Now, now how do I understood about inner game? Because definitely I read a lot and I was a big fan of this. This is one of the things that I would love to share. Uh, Guys, if you have read Mystery Method, I read Mystery Method long back in 2017. इंटरेस्ट में मुझे कुछ नहीं समझा वो किताब में. वो किताब मेरे दिमाग में घुसी भी नहीं तरह सी. But I was like, okay, the Ross Jeffries used to talk something about the seduction pattern, NLP. तो काफी चीजें समझ में आई. Someone is asking, do I need to do NLP? No, because certain concepts of NLP are very good, but certain concepts are designed in a such a way that it is coming from a family perspective. It is coming with the perspective of talking with NLP is neuro linguistic programming. It's not natural language processing. That NLP is different. This NLP is different. So there was a lot of people like Hypnotica and Dr. Robert Lohr. Dr. Robert Lohr, the author of No More Mr. Nice Guy, he talks a lot on therapy. A lot of other people are there. Sadia Psychology is there. She also talks a lot on all those things. Joe Dispenza, Joe Whitley, and a lot of other people are there who talks a lot about this. So when I started about the Ross Jeffries, I started understanding and I heard both of their podcasts. So in that podcast, Ross Jeffrey and these two people talk, and you know both the people are speaking right, and they are having a very good frame battle. It's not a frame control, but a frame battle between those people are there, and both of the things are very right from their perspective. Now Ross Jeffrey is telling this guy mystery. He's telling that, oh, I understand your night game, your structure, model, and mystery method, but I don't think in that way because a person like me who's like 50 years of age and he has that thing and he's not comfortable in that club atmosphere. So for people like me who have and people coming to me who have a lot of inner issues, I don't think that those things will work for those guys. Now, after 1 or 2 years of game, I again read it Mystery Method. I have read Mystery Method 4 times. So now I read. Now, if I again read now, I see the things from very different point of view. So it's the same knowledge, but every time you grow, your beliefs and your filters are changed. Everything around you is changing. So coming back to the thing, like what is inner game and what is outer game? Inner game Inner game is something which is related with your belief system, your self image, self worth, self identity, mindset, inner dialogue, your assumption, and just as your worldview. Like, how is your inner world going on? Now, the outer game is mostly related with the verbals, your behavior, your communication, your dialogue delivery, your technical skills, and how do you represent? That's all. They both are equally important. I'm not saying because one can be innerly very salted, but he can be verbally fucked up, screwed up, and one can be verbally very good.
but still nothing is coming into his alignment. He don't believe what he is saying. Both are equally important. Inner game is a long topic. In future, if I think supposed to, like, I will definitely like take inner game and something for it, like unleash inner game, something for like around 3 months at least. Because a lot of things are there. Porn is there, masturbation is there, parenting is there, genetic effects is there. Lot. If I count the things, it doesn't need. But it's just a example. So inner game is not only for game but also for personal growth. Yes, definitely, bro. Attachment style, you have to understand your attachment style. You can read a lot of books are there. One is there, attached. It's a very good book. I truly recommended it. One is Inner Child Healing by Thich Nhat Hanh. That is a good book. One is The Third Soul. The other is Yayati by Vishnu Sakharam Khandekar. The book is in Marathi, but English version is also available. The another is Bob Proctor, Consciousness. Joe Dispenza's all the books are amazing. But to read those books and to go into so much depth and laws of human nature, it will really take you like around 2 years. If you read at least you pay like around like 4 to 5 hours daily. भाई तुम काम करोगे कि पढ़ते बैठोगे? So that's the advantage. Like you try to learn from someone, get the crux of it, and your thing is done. For example, like me, if I want to learn and really grow into this coaching industry, I will go to the best person who is the best. Tony Robbins and Grant Cardone is the best. Second comes is Gary Vaynerchuk. He's the best, but I don't have that. उतना हिसियत नहीं है. Who is best in India? I think Vivek Bindra and the another Dr. Sneha Desai is best, and the another lot of people are there. But in digital coaching, if it comes to my budget and everything, I'm learning from Siddharth Rajshekar, which is good. I truly believe that he's amazing. So I'm learning coaching from him, and the purpose behind that, who will learn all those things? What is this? What is that? Just give me what is important to me. Similarly, when it comes to your inner game, you don't need to get enlightened. Just you need to fix certain things. Work with someone, whether you work with me or someone else. It doesn't matter. I don't say, but at least do something. If you feel that is your problem, if you don't feel, that's fine. Good for you. Try and work on your verbal game. Some people really don't know, don't need a inner game, and that's fine. I'm not saying that it's everyone's cup of tea. A lot of people I know, they don't need game. They know everything and they will never come in game. And that's fine. Because that's never their cup of tea. Clear, shall I proceed? Type guys if you can, because I need to check whether everyone is with me. Clear. Okay. Chalo. Let's talk about the different perspective. Does meditation sorts inner game? Not necessary. Sometimes the person get extremely screwed up. I have seen most stupid, idiot and dumb ass people in meditation. At least वो meditation करने के पहले better थे. उसमें से एक मैं भी था एक जमाने में. Okay, coming back to this point, understand this is the game plan. This, you see this cursor, it's inner game, it's your outer game, and it's your game plan. Just because you have sought your inner game, that will doesn't mean that you will be good at speaking. I know a lot of monks from Ramakrishna Mission, from Swami Narayan, from ISKCON. I know a lot of devis, sisters, masters, and blah blah people. भाई 10 मिनट बात सुनने की उनकी मतलब सुनने का कैलिबर नहीं रहता क्योंकि they are so boring, those stupid, but they are internally extremely sorted because 6 8 10 घंटे वैसे खाना खाते हैं वैसे रहते हैं. It's not necessary. It doesn't mean that if you have sorted internally you will be good with, but of course if you will try to good at it, it definitely will give you better leverage. So outer game is your verbals, inner game is your internal world.
your beliefs, your values, your attitude, everything. We'll talk a lot about it tomorrow, but it's just the briefing of everything, like what is important. And now, let's come back to this point, inner game. The inner game is a filter of belief. Whatever I say, uh, you have different filters. For example, uh, like I was in the coaching program and it was related with belief, and it's like एक word देता था और फटाक से बोलना पड़ता था. Father, मैं बोलता था बिंदास. Family, luck, life, blessed, girlfriend. Uh, 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 you know, it's the same thing. And different people used to give different response. एक को पूछा mother, आंख में से पानी आ गया उसको. She didn't have mother because the experiences, the filters in her belief, and the words coming from those filters are very different. That is shaping the reality. That is creating the impact. Okay, free flow. Okay, it's like so, guys. This is important thing. But just because your inner game is sorted, your outer game is sorted, you need a roadmap. इसके बाद में ये क्या करना है, इसके बाद में ये क्या करना है, इसके बाद में ये क्या करना है, इसके बाद में क्या करना है. There are lot of things. This entire, and that's the reason we follow the roadmap, the structure, the strategy, the plan, the technical aspect. I was in the game and like I did like around like चार बुट कैम्प हो गए थे, 5 मेंटरशिप भी हो गए थे. ओवरऑल 6 बुट कैंप्स लिए, 5 मेंटरशिप लिए. एंड द लास्ट mentorship I took was from the guy Marcus Wolf. He's an amazing person. Marcus Wolf, you know, he's a very big international. तो मैंने ऐसा सोचा था कि मैंने आज तक कभी इंटरनेशनल लोगों से नहीं सीखा. Let me find out how the international people are. So the first thing he said now, I said like bro, मैंने इतनी किताबें पढ़ी है, मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये किया है, वो किया है. Like what the hell new you will teach me? And he was like, if I will teach you something which you already know, then trust me, you don't have to pay me and we can discontinue. I was like, let's. And then when I joined this mentorship, he didn't teach me anything about the game. Yeah, certain aspects, like 5 to 10%, 20% was related with the game, but most of the things he taught me was not related with the game. Was not related with the game. It was the other issues that was coming in game because I already had at that time like 6 to 7 closes. And in that 6 to 7 closes, I understood and I had relationship, I had breakup and patch up. So after that, I started growing after 2 years. And I don't play too much on results because results vary from person to person. I do have a student who has like around 200 to 50 plus closes. I know people who have like 18 to 15 or 20, and I know the people who have one or two, and they are most amazing, most sorted people. I really love to hang out with them, and I definitely love to spend a lot of time with them. So I don't see the someone's value on the basis of those things. Uh, and playing a numbers game, it still puts you in the same thing. I think spirituality who had helped me in a lot of things because it was like kitna karna hai, kitna karna hai. When the first result I got, I was not happy. I was crying. Itna mehnat kiya, itna parishram kiya sirf is cheez ke liye. It was not. I thought it was not the worthwhile thing I invested. And after a certain period of time, I found that it's just the person keeps on changing. Issues remain the same. Someone is asking like, is my inner game sorted? No one's inner game is sorted. No one is enlightened. अगर इनर गेम सॉर्टेड होता था तो ना वो कोचिंग में होता था. पहली बात तो वो कोच नहीं होता भी था तो वो कोई बहुत बड़ा स्वामी विवेकानंद होता था, भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस होता था, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध होता था, समथिंग होता था. नो वंस इनर गेम इज सॉर्टेड. Whether it is me or whether it's the best in the world, you don't need to 100% sort. At least you need to be stable. That's a huge difference between getting 100% sort and getting stable. Clear है? Even the best people in the industry, Grant Cardone, Tony Robbins, they still get depressed. They still do have the issues. So now when it comes to belief system, we'll talk a lot of things.
and we will give you certain tools that which you can, certain tools or methods, certain things which are applicable to everyone, which are non-damaging. It has no side effects, and it has nothing like if you overdo it or if you do it less, you will have a disadvantage. And this is the thing I'm telling you from Raj bro. बहुत बढ़िया beard. Yeah bro, thank you, thanks a lot. थोड़ा सा inspire, trying to change the look. I've just got this tattoo. It's yin and yang symbol, and the upper symbol is of this symbol is related with belief. It's a Viking symbol, and it is creating your own reality. But when you try to create your reality and you get into too much of ego mode, and it's like मैं कैसे रह रहा हूँ, मैं कैसे परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं कैसे ये रह रहा हूँ, you get into that loop, you need to act cool and this. Thank God that I don't have that image issue problem. If someone calls me stupid, idiot, dumb, I don't mind nowadays. पहले बहुत था जब नया नया गेम का कुमार सिर पे चढ़ गया था. अभी मैं बोलता हूँ हाँ, कोई मेरे को ऐसे बोलेगा कि ब्रो यू आर स्टूपिड, मैं बोल रहा हूँ ब्रो एक्सट्रीमली स्टूपिड, आई डोंट माइंड. बट एट दैट टाइम द ईगो वाज लाइक दैट कि राज ने एक इमेज एक क्रिएट किया और वो सबके मन में गाड़ी गाड़ी जा रही है. सो आई डोंट माइंड, लाइक लॉट ऑफ टाइम्स इट हैपेंस, like certain people get convinced through verbal, certain people needs demonstration, certain people are result oriented, certain people को ले दिखाने पड़ते हैं, certain people don't go too much into that lay thing, they only see like how much the knowledgeable and experienced the person is. It all depends. So the type of person you are, the type of audience you attract. And I'm not nowadays, I'm not in that battle like show the people, and like because it creates a lot of issues inside. You have to always perform, and to perform someone, you will have lot of serious level of issues. You will be like next Michael Jackson, next like Britney Spears going to shave her head, or next Sushant Singh Rajput, maybe, because that will fuck you up. You know, you will always have to pretend how cool I am, how amazing I am, how I am able to create the impression. And trust me, I am no more in the battle. पूना में आता हूँ तो मैं कुछ गिने चुने लोगों से मिलता हूँ जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं. अश्विन भाई है, सिद्धेश है, वो आ, बहुत से लोग हैं यहाँ पे जितने उनके नाम ले रहा हूँ. हमारे अमर भाई है, वो हमेशा उनसे तो हमेशा बेताब रहता हूँ मिलने के लिए मैं. सचिन भाई है. तो आई लाइक लिमिटेड पीपल, गुड पीपल. एंड ब्रो एक 5'3" पिकअप कोच है जस्टिन मार्क. नो कमेंट्स ऑन other coaches bro. I don't take names because recording is there, it doesn't feel good. But of course I know each and every coach's person. I'm not saying all are bad, all are really, most of them are good. I am very thankful and blissful to God that 70, 80, 90% of the people I have met are very genuine and honest, and I respect them. And दे आर गुड. जस्ट बिकॉज मैंने उनके दुकान के सामने मैंने अपनी दुकान डाल दिया तो हो सकता है कि थोड़ा सा वो इशू आ जाता है. बट आई डोंट हैव एनी ग्रजेस टुवर्ड्स देम. हाँ, if you will talk about this, my husband came and like a husband came and all those issues will be tomorrow and in Q&A. So now the inner game and outer game, those things. Okay, let me complete this topic. So I don't get into that ego battle and those things uh, because it creates a huge problem. If you have that problem that, oh, people are watching me and I need to show someone else, trust me, in long run, you will damage yourself seriously. If you have the habit of going out and taking 10 to 15 people and let me show them how cool I am, trust me, this game, this pickup will screw you badly, badly at the extreme level. You will be extreme image conscious person. In long run, in 5 to 6 years, you will never able to sleep. I have been there. I know how it feels. It's a stupid level of game and it sucks you because sooner or later the people will come to realize इसको हर चीज दिखाने में मजा आता है and it becomes a part of your personality. So if you are in that person, like if you have been spending like 2 to 3 years and if you have that habit, unless and until you want to become a coach, that's a very different thing. Coaching industry में करना पड़ता है. You have to show people. So
coming back to this topic, both the things are important. Inner game is important, outer game is important, and if they are too much diverting from each other, what you are saying, you are not believing, you will have the congruency problem. भाई मैं बोलता तो हूँ. That's called that's the issue come with the canned material. When you speak with the canned material, when you use other lines, sometimes it works, but sometimes there is another aspect of game. It works good at starting, but after a certain period of time, it stops working. Lot of things are there. Lot of things doesn't need to be tell in like this, because it's not like one thing. It's 2 to 3 things out of 100 things. Inner game is a huge concept, uh, maybe, but it's just to give you the example, like how the things are. Now coming back to inner game. Inner game is all about your beliefs, and outer game is all about your verbals and structures. Now, how do you change your entire belief? So for first, you have to guys answer. Now I will stop the recording, and if I will ask you certain questions, guys, let me know. Like, allow the participants to unmute themselves. Yes. Uh, guys, just type in the comment box how are the beliefs formed, because if inner game is mostly about beliefs, belief is one of the factor. Beliefs is the major important factor in inner game. Now my question is, how are the beliefs formed? Comment in the chat box. How are the beliefs formed? Because of thoughts. Okay, thoughts. Okay, our experiences, one factor. Yes, parenting, childhood, it comes in experiences. Past success, it comes in experiences. People around us, reference experiences. Yes, it do plays a major role. People around us. I think जो parents बोलते हैं like 6 feet money होना चाहिए. It is one of the important element, because when I did my inner child healing, I had that issue. Just a minute, guys. I had those issues because uh, because if your family has cursed you a lot, you will अपनों के शब्द जल्दी चुभ जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, यू पीपल आर देयर, एंड आई नो लॉट ऑफ पीपल जो मेरे बारे में बोलते होंगे, अरे वो तो साला ऐसी है, बंडल है, ये है, वो है, उसके शब्द मुझे कोई फर्क नहीं गिरेंगे. लेकिन जब मेरा फादर ऐसा बोलेगा ना, तो इट विल हर्ट मी, बिकॉज आई हैव कम, द ब्लड लाइन इज सेम. इफ मदर हैज सेड समथिंग, वो गर्भ संस्कार वगैरह शिविर करते हैं, ये सब वहाँ बहुत सारी बातें रहती है, वो बहुत स्ट्रांग बनते हैं. अगर वो चाइल्डहुड में हुए हैं, तो इट्स लाइक सेक्सुअल गिल्ट, शेम, एंजाइटी, बहुत लंबे लंबे टॉपिक्स होते हैं. और हाउ डू द बिलीफ शेम बिलीव्स बनते कैसे? वन इज एक्सपीरियंस, द अनदर इज movies and shows. That movie shows. और guys, थोड़ा दिमाग लगा. Knowledge, yes, of course, knowledge plays a big part in shaping the belief. Experience, one is experience, one is knowledge. Books come into knowledge, movies and shows come into knowledge. Experience definitely. पेरेंट्स के साथ जो हुआ, लाइफ में जो हुआ, रिजेक्शन जो हुआ, सोसाइटल प्रोग्रामिंग, it all comes in experience. One is knowledge, one is experience, but knowledge and experience is not everything. I will give you my personal example. I will give you a lot of other people example. I have one roommate who had a girlfriend in college, but right now he's not doing pretty well, because रेफरेंस एक्सपीरियंस उसके पास में था. आई नो लॉट ऑफ पीपल जो एक जमाने में हीरो थे, आज कुछ नहीं है. दे हैव स्क्रूड अप ऑल्दो दे हैड एक्सपीरियंस. आई नो लॉट ऑफ पीपल हु हैव गुड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, बट राइट नाउ जिंदगी ने ऐसी लगाई है उनकी, अभी बहुत बायस्ड हो गए. लक, यस, लक कम्स इन एक्सपीरियंस. लक ऑल्सो कम्स इन एक्सपीरियंस. गाइज, मोर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मिस कर रहे हो. एक तो नॉलेज है, एक तो एक्सपीरियंस है. ऑफ कोर्स, नॉट डिनाइंग द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपीरियंस. थिंकिंग, यस, दिस गाय मुन्ना भाई इज नजदीक.
thinking, your perception, your attitude, it has the big role. Attitude plays a major role in shaping your, one is knowledge, one is one is your attitude, and the another is your experience, but still there is one more. Let me give you an example. I have no experience of technical skills. Neither I have any experience of software, any software engineer, and software engineer, data science. Yaman. Suppose, for example, Yeah. Yaman is a software engineer, and he has an experience in, Sagar is a software engineer. So Sagar bhai and me goes to an interview. I am more. I am more, bro. Okay, just let me mute all. Okay, let me mute all. Okay, so Sagar bhai goes and me goes for the same interview. I have knowledge. I have read lot of courses, done this, that. I don't have experience. Okay, my attitude is I'm a very positive thinker as compared to Sagar bhai, but still he is getting hired. और चलो मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, फिर भी एक मेजर एलिमेंट होता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गेम में, एंड यू नो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज, यस, द पर्सन हु सेइंग प्रैक्टिस, ही इज वेरी नियर, दैट्स द स्किल सेट। स्किल सेट, ये चारों का जो कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, तब जाके आपका बिलीफ बनता है। प्रैक्टिस, yes, of course, you need the skill set. If your beliefs are strong, how do, no sorry, if you are, if you want to sort your belief 100%, भाई डेफिनेटली आपको थोड़ा सा नॉलेज तो होना चाहिए, क्योंकि आपको अगर गलत नॉलेज है, लड़की को फूल देने का, लड़की के पीछे घूमने का, लड़की के पीछे 10 चक्कर का, उसको 10 बार दिन में 100 बार मैसेज करने का, इफ यू डोंट नो राइट टेक्सटिंग, राइट दिस दैट, your entire knowledge system is very different. The wrong knowledge can backfire you. I have done this. ग्रैंड गार्डन अप्रोच एलिना गार्डन आई थिंक 13 टाइम्स। मैंने एक लड़की को 8 बार अप्रोच किया, 9वीं बार उसको बाप और भाई घर पे आ गया, बोला तुम्हारा लड़का पागल है क्या रोज जाके यही कर रहा है। दैट वाज रॉन्ग नॉलेज ना, ऐसा नहीं होता है। सो राइट नॉलेज, द एक्सपीरियंशियल नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, so coming back to the point, I will show you the diagram, and I think so guys, anyone can take a screenshot for it. So you see this is a diagram. Attitude, your skill set, your experience, and I have written right subject to information about game, experiential truth. Now there are certain realities always clashing in the experiential truth also. If you, if you read certain people in the industry, is like always like, oh, don't get into that technique, ये बोलना है वो बोलना है वो। If you follow Todd, he's more into technical game. Follow Ross Jeffries, he's most into that inner game, and it's like I believe that all are important, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, उनको सिर्फ ये बोलो भाई जाके कुछ तो भी बात करना है, they will do amazing, but on the other hand side there are the other people also कुछ आड़ा टेढ़ा कुछ वाहियात चीजें कर रहे हैं, और एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस जो आ रहा है। आई नो वन गाय, लाइक when it comes to the actual experiential result, it's almost like dead, and दूर से देखने से बहुत अच्छा दिखेगा। It is there, it is a hardcore reality. You have to understand those things are attitude is very important. If your attitude is sucked up, messed up, now see the people with wrong attitude do also get, have sometimes do have a strong belief, but in long run it will hamper them. Like I know certain guys like too egoistic, too badass, too cocky. I had one friend, very ugly, very this, that, and very nothing. His natural friend, not gamer or artist, not practiced anything, but he has close 9 sentence and he had a very wrong attitude.
नाउ इफ आई सी हिम, भाई उसके साथ मैं 10 मिनट टाइम स्पेंड नहीं करूंगा. यू नो व्हाई? बिकॉज इन लॉन्ग रन इट हैम्पर्स. Now it comes to skills. Yes, your verbals are important. Your practice is important. When the combination and experiences, previous RAS of your brain, RAS reticular activating system, you can read and research a lot about it because RAS do plays a major role in shaping your current reality. So, for example, one of my goal is I want to be the high quality man of nines and tens who has high quality women as a byproduct of my lifestyle. I don't need to gain. अब imagine करो, this is my current goal कि I need to have 10 tens. अगर मेरे पास में अभी right now, if I don't have anyone in rotation, will that come into my reality? No way. It needs to be in a line somewhere. If I have the package, if I am earning like around 50 to 70,000 in a month, then I can put myself in that. I can break the threshold of like 1 lakh. But if I say, or bhai, I would be like next Grand Garden, it's next to impossible. I would like next Neha Desai. No, man, I can't. It's like it will not come into my reality. But okay, of course, can I be next? Like one of my good friends, Shakti sir. Yeah, of course, I can be. Can I be someone like the other people in the industries are doing? Guys, just give me 1 second. I need to put a charger. I want a harem of women, bro. Make sure that you are at least having 3 to 4. It is a long term harem. भाई बहुत ज्यादा हो जाए, but still good. I like that. So, coming back to this point, this is all belief system things. Now, we'll end and stop recording here and we'll start with Q&A. Okay? इसके ऊपर कल बात करेंगे और परसों बात करेंगे. I thought like maybe 1-2 दिन काफी रहेंगे, but I thought like maybe around 3 days तो लगेंगे because बहुत लंबा टॉपिक. वैसे तो 3 महीने लगते हैं बेसिक बेसिक लेवल पे कुछ कुछ चीजें समझने को. अरे भाई रियलिस्टिक बोल रखो यार. ओके. चलो गाइस, I'll stop the recording and start with something like Q&A. और भाई आज से ही रिलेटेड सवाल पूछना. अभी ये मत पूछना कि अभी एकदम बिलीफ सिस्टम कैसे सॉल्व करूं. कमिंग बैक, विल स्टार्ट विद Q&A सेशन. आई विल एनीवन ब्रो प्लीज. गाइस चैट ऑफ करता हूँ. तुम यार हाथ रेस करना, हैंड रेस करना. If you are comfortable, come to screen. If you are don't comfortable, don't. I will unmute you. कौन है रे बाबा हाथ ऊपर करने वाला कौन है? कैसे दिखता है रे इसमें? हाँ, दिस सागर भाई. ओके, जस्ट a minute. सागर भाई, आई विल अनम्यूट. लोअर हैंड. हाय राज भाई, मुझे एनएलपी के रिगार्डिंग सवाल है. एक्चुअली आई डिड अ सेशन करंटली इन एनएलपी. वो मेरा एक ब्लॉकेज था लॉन्ग टर्म, जो आप टैपिंग से निकालते हैं ना, फाइनेंस का जैसा था. तो मैंने एक एनएलपी का सेशन किया था, तो उसमें ऐसा निकल के आया है कि मेरे मतलब एक पर्सनल है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बोलूंगा, लेकिन वो मेरा फाइनेंस रिलेटेड इशू था कि मैं एक डिग्री के लिए मैं अपना एक मैंने पैसे से ज्यादा अहमियत इसको दे दी कि जो अपना सम्मान होता है ना, तो वो मैं रिजेक्शन मोड में गया था. मेरा सबकॉन्शियस माइंड वो रिजेक्ट कर रहा था मेरे अपॉर्चुनिटीज. तो वैसे ये गेम में भी इसके ब्लॉकेजेस होते होंगे ना, हाँ जो हाँ, एनएलपी से निकाल सकते हैं. जो आपने बोला एनएलपी है, तो एनएलपी ने आपने किया है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है कि एनएलपी से क्या ठीक. ऐसे कुछ ब्लॉकेज तो कुछ निकाल कुछ सकते हैं, चीजें एटलीस्ट उस एनएलपी पर की काम तो कर सकते हैं.
कुछ कुछ चीजें एनएलपी की बहुत अच्छी, बट कुछ कुछ चीजें सागर भाई एब्सोल्युटली शिट है। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी वो जो ट्रेनर्स वगैरह जो होते हैं वो क्या करते हैं ना, बहुत से लोग है ना, जैसे उसमें एक कंसेप्ट है मिररिंग करके, जो हम्म, सामने वाला कर रहा है वही हमको मिरर करना है। वो आप गेम में अप्लाई करोगे तो इट विल बी लाइक यू आर टू मच ऑफ वैलिडेशन सीकर। You can't lead the person because you will seem as like why. Now use word of apologies, sorry, please, thank you. Use it regularly. Those things are explained from a very different. Now when it comes to blocks, of course, जरूर मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो एनएलपी के एक्सपर्ट है लेकिन मेंटली स्क्रूड और फक्ड अप है। हम्म, ऐसे लोग भी है जो एनएलपी से काफी सॉल्व हुए। हम्म, करता है, डिपेंड करता है, कुछ कुछ कंसेप्ट अच्छे हैं उनके डेफिनेटली। जो काइनेस्थेटिक ऑडियल और विजुअल का जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छा है। हम्म, जो उनका आरएस कंसेप्ट है वो बहुत अच्छा है। जो कुछ ट्रोमा रिलीज वगैरह के लिए तो, और ये चीजें भी डिपेंड करती है हु इज द ट्रेनर। तो वो सब ट्रेनर्स और कोचेस के स्टाइल सब depend करते हाँ, लेकिन ये आपने इन पर्सन किया है कि हैं। मैंने इन ऑनलाइन किया पर्सन किया है और मैंने संदीप गज्जर से किया है, वो डॉक्टर स्नेहा देसाई की टीम के थे। है? ओके, तो आपका वेरी गुड। एक्सपीरियंस कैसा रहा उसके साथ? और वो कंपैरेटर ब्लेंडर और नॉन ब्लेंडर क्या है, जो फाउंडर्स थे एनएलपी के। बट एनएलपी 3 दिन 6 महीने में नहीं होता है। रॉस जेफरीज का ऐसा था, वो 10-15 साल एनएलपी में रहे हैं, वो हिप्नोथेरेपिस्ट रहे हैं, बहुत बहुत चीजें पढ़ी है, 500 हजारों किताबें पढ़े होंगे। दे आर द टॉप लेवल ऑफ मास्टर्स, इसलिए वो जब करते हैं तो वो चीजें मेक सेंस बनती है। फॉर एग्जाम्पल, स्वामी विवेकानंद ने कहा ब्रदर्स और सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, पूरा अमेरिका का वो चिकागो का हॉल खड़ा होकर हम्म, तालियां बजाने लग गया। मैं बोलूंगा सिस्टर्स राइट। ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, कुत्ता कोई दे नहीं करे। वो डिपेंड करता है, उनका ऑरा डिपेंड कैसा करता है, लेकिन राइट। और है। मैं एक और एक बोलूंगा कि एनएलपी से देर आर लॉट ऑफ हीलिंग टेक्निक्स। अभी मैं प्राणिक हीलिंग करता हूँ, मैं खुद प्राणिक हीलर हूँ, 5 लेवल तक मैंने किया है। उससे भी बहुत बेनिफिट होता है। जब हम लोग चक्रास क्लीन करते हैं ना, बहुत से आपके ब्लॉकेज चक्रास में भी होते हैं। यू नो दैट यू अगर आर भी इन अ डिपेंड डिपेंड स्पिरिचुअल। करता है, इसमें भी डिपेंड करता है। मैं ऐसे पर्सन को भी जानता हूँ, वो विपासना में आने के पहले वो चकरा वगैरह ही करता था, बहुत गंदा स्क्रू अप हुआ। तो इट ऑल डिपेंड्स, कांट से एग्जैक्टली। डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स वर्क फॉर डिफरेंट डिफरेंट पीपल। ओके, या राइट, चलो राइट, अपन राइट। करते हैं पर्सनली बात, मुंबई तो आ रहा हूँ, मिलके बात करते श्योर, श्योर, हैं। डेफिनेटली, ओके गाइस, डेफिनेटली, एनीवन या। एल्स? दो लेते हैं, बाकी जिनको कनेक्ट करना है दे कैन मैसेज मी, पिन मी। ओके, किसने हाथ खड़ा किया था यार? सर। या ब्रो, सर कॉल पे फिर बात हो सकती है क्या आपसे? हाँ ब्रो, कॉल पे बात कर लेंगे। ठीक है, कॉल पे बात कर लेंगे, बट अभी नहीं, बाद में। तो बाद में कब सर? मैसेज करो। ठीक है। रात को। हाँ, रात 10 बजे का फ्री। हाँ, किसने हाथ खड़ा किया? सिद्धेश जोशी, हाँ सिद्धेश भाई। हाँ सिद्धेश भाई मेरा बोलो। पूछना है कि एक्चुअली इनर चाइल्ड को हील करने के लिए और वो जो ट्रॉमास जो है अनस्टक जो बॉडी के, उसको रिलीज करने के लिए कौन सा इनर गेम का प्रोग्राम बेनिफिशियल है? और एक बात कि वो जो अभी मेरा रिसेंटली जो इशू हुआ है उसके अंदर से डिराइव हुआ कि सिद्धेश इज गोइंग थ्रू एंशियस अटैचमेंट स्टाइल and has a lot of, you can say, trauma stuck inside due to bullying and many other things in his life, as well as he had a lot of inner child issues, जैसे कि मैंने बोला। तो ये सब को रिजॉल्व करने के लिए मुझे पहले प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। That's- उसी से मेरा गेम जो है वो सॉर्ट होगा, ऐसा डेरिवेशन आया है। एंड दैट्स द रीजन आई स्टॉप गेमिंग एंड आई एम solely focusing on releasing and, you can say, resolving all of this. So what would you suggest or comment on this? सिद्धेश भाई देखो, इनर चाइल्ड हीलिंग डिपेंड करता है किससे सीखा है। आई एम आई डोंट थिंक, मैं यार मैं जानता हूँ बहुत सारे इनर चाइल्ड हीलिंग के कोचेस को भी जानता हूँ जो सिखाते हैं, उनसे ज्यादा स्क्रूड और फक्ड अप लोग मुझे नहीं दिखते वो। और इट्स
Is it a 100% that concept? No, it depends. It depends. Lot of things are there. ऐसा नहीं कि सिर्फ यही चीज है क्या. One has to particularly understand, think क्या चीज मुझे सूट करेगी, किस चीज का सही उपयोग है क्या. बट ऐसी डेफिनेटली ऐसी प्रैक्टिसेस हमेशा करना चाहिए जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जिनका कोई इशू नहीं है. जिनको मैं बहुत ज्यादा करूँ या बहुत कम करूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. बाकी अपन तो मिलके बात करते हैं, मैं आने वाला हूँ वैसे पुनः. ओके वेल. आऊंगा ये नेक्स्ट वीक वगैरह. ओके कोई बात नहीं, पर वो जो आपने बोला कि वो लोग ही कुछ फक्ड अप होते हैं, तो फिर इसके बारे में फिर वो नहीं, बट ट्रॉमा रिलीज करना इज नेसेसरी, बिकॉज जैसे कि आपने बताया. ट्रॉमा रिलीज के लिए सबसे बेस्ट है ना, आप ट्राई करो. ब्रेथ वर्क ट्राई कर सकते हो, सुदर्शन क्रिया ट्राई कर सकते हो, शांभवी क्रिया ट्राई कर सकते हो, अ, ईशा क्रिया ट्राई कर सकते हो. ब्रेथ वर्क is applicable and easily applied by lot of people, and it doesn't have that level of side effects. breath breath work is literally releasing something which you are holding. मैंने काफी बार ब्रेथ वर्क किया है और 2-3 महीने में एक बार करता हूँ. हेलो या सर, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे पूछो कि कॉल पर ही पूछूं? कौन नाम तो बताओ भाई. सर, निर्णय. अरे भाई तो पूछ लेना, बाद में पूछ लेना, कॉल करने वाला है ना. Okay guys, we will take a last question and then we will wrap up. Bro, getting this feeling of shame after that husband up. Shubham, Redmi Note 7. हेलो राज भाई. हाँ, शुभम और Redmi Note 7 Pro. ओके, दोनों पूछो, पहले एक पूछो बाद में दूसरा पूछो. हेलो या राज भाई, आपने बोला था ना, यू ऑलरेडी टोल्ड दैट कि जो थोड़े से फक बॉय होते हैं उनको आसानी से मिल जाता है, और जो काफी सीधे साधे बंदे होते हैं उनको आसानी से गेम में काफी डिफिकल्टी होती है. तो आई एम काइंड ऑफ दोज गाइस जो थोड़े सीधे साधे हैं. एक मेरा फ्रेंड है, आई एम आल्सो मेंटर, मेंटरशिप में हूँ मैं. कोच का नाम नहीं लूंगा मैं यहाँ पे. बट एक मेरा फ्रेंड है, उसको रिजल्ट्स मिल रहे हैं. मैं भी उतनी एफर्ट कर रहा हूँ, मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहे, मेरे को नंबर क्लोज हो रहे हैं पर ज्यादा तो बात नहीं मिल रही. लेक्स हो रहे हैं पर पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है. और उसको मतलब कि 5-6 नंबर क्लोज हुए, मतलब कि अभी चल रहा है उसका. तो ऐसा क्या है, मतलब उसका वो भी कुछ भी बोल देगा लड़कियों को, जो मन में आता कर देता है. बट आई एम काइंड ऑफ लॉजिकल गाय. हाँ तो तो ब्रो, आपने बोला था. there are certain practices that needs to be done. You do the practice whichever your coach is. Ask हम्म. him that teach me some practices that will help me to come out of my head. Lot of practices are there, lot हम्म. of things are there. But one of the best thing I tell you, that doesn't have side effect, that doesn't, I don't know which structure you are following. So the lot of teaching style is also different. But one of the best thing to come out of the head is, you know, don't do the same thing again and again. Always do little things which are very different, which are new every time. If you still have that problem, then definitely there is one book here. Name of book. You message me. I am not getting the name of the book. So there are certain words. एक्चुअली So माय कोच for माय example, कोच टोल्ड मी लाइक go to any other place like public place, और उसमें डायरेक्शंस पूछना है लड़कियों से. तो मैं डायरेक्शन वगैरह पूछी, उससे कुछ नंबर क्लोज हुए. बट नाउ ही इज टेलिंग मी टू लाइक चेंज योर लोकेशन एंड चेंज योर ओपनर लाइक सेमी डायरेक्ट और डायरेक्ट. तो तो ब्रो हो सकता है आपका इनर गेम से रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा है. See, some people will be like, hey, I like you, I think you are cute, blah 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 blah. और मैं गया था, पानी पूरी खाया, तुम चलोगी क्या मेरे साथ में, कुछ भी बकवास करेंगी. And it works for them. मेरे लिए वो नो सूट नो नहीं करता. राज भाई, कैन आई सेंड यू रिकॉर्डिंग्स लाइक. मेरा कोच ने बोल रखा है जब भी तू बाहर जाता है, अप्रोचेस करता है, तो रिकॉर्डिंग करा करो मेरे को भेजा कर. तो उससे क्या रहता है कि अकाउंटेबिलिटी रहती है. तो यू कैन
Yeah, bro. See, it लिसन comes माय in the ऑडियोस। it comes in the तो आप outer देख सकते हो aspect कि कहाँ of पे। your हाँ। verbal game. It comes in the हम्म outer हम्म aspect of verbal game. I will give you another example. We are ये topic definitely you message me, you pin me, we will talk. I will listen to the recording, but I will tell you how ओके ओके those things really doesn't matter that much. ओके। I will tell you. मैं क्या करता था जब when I started boot camp ना, तो मार्केटिंग मुझे कुछ समझती थी नहीं ज्यादा, and I'm still very poor in marketing and I'm very poor in sales right now, but I'm still learning and I'm trying to be a good receiver when it comes to all those things and pitching myself. तो मैं क्या करता था ना, मैं लोगों के साथ में बाहर जाता था, उनको थोड़ा डेमो वेमो देता था। तो मैंने एक लड़की एक सेट टू सेट ओपन किया, फिर सेट के साथ में हम बात करते 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 गए। सेट ओपन करते ही मुझे 10 मिनट में समझ में आया कुछ नहीं होने वाला है यहाँ। लेकिन मेरे साथ हम्म में एक बंदा है, उसके उसके दिमाग में तो वो तो न्यू भी है, उसके दिमाग में तो इंप्रेशन क्रिएट करना है ताकि वो अपना बूट कैंप खरीदे। तो फिर हम्म मैंने डाला 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 और सेट को लेके गया रात को 1:30 2 बजे तक, और मैं घर तक चले गया उसके बेडरूम तक। फिर यू नो मुझे स्टार्टिंग में 5-10 मिनट में ही समझ में आ गया था कुछ होने वाला है ही नहीं, लेकिन उस बंदे का रियलिटी शेक हो गया। Was the verbal goods? Yes, of course, verbal was good. Was my inner game okay? हम्म Yeah, it was okay. Lot of things. कभी कभी क्या होता है, वो दिखने में और समझने में वो बहुत चीजें अच्छी लगती है, वो रियलिटी में अच्छी होती नहीं। बिकॉज देर आर सर्टन फिल्टर्स इनसाइड which blocks you. हम्म The topic for today's session was something like that. Tell your coach, हम्म this is my issue. What I say, I don't believe it. See, verbals are important. I'm not saying it is not important. It is important. It comes into technical aspect of game. बट द रीजन इज भाई आप तो ऑलरेडी कोचिंग ले रहे हो, और डेफिनेटली जो कोच होगा ही माइट बी अ गुड पर्सन, एंड हम्म वो आपको तो स्ट्रक्चर वगैरह पूरा सिखाएगा ही, बट दिस लाइक यूजर एक्सपीरियंस एंड यूजर इंटरफेस, यूएक्स यूआई बाहर मुझे अच्छा दिख रहा है, अंदर अंदर मैं मेल डाल रहा हूँ तो ईमेल आईडी नहीं आ रहे हैं, कुछ अलग साइट खुल जा रही है। यूजर इंटरफेस अंदर से पूरा सिस्टम ये है, बाहर से गाड़ी अच्छी दिख रही है लेकिन हर हर 8 दिन में काम दिखा देती है, और सिर्फ चमकती बाहर से अच्छी है। ऐसा भी होता है कभी कभी, हम्म ऐसा भी होता है ना। सो वी आर टॉकिंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ना, हाउ डू यू कम आउट ऑफ द लॉजिकल माइंड, ऑलवेज ट्राई समथिंग न्यू, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। द Like पीपल हु most आर of time I feel demotivated while doing game, but मेरा माइंड कहता डूइंग नहीं भाई समथिंग, जिस रास्ते इतनी से मैं जल्दी रोज कैसे। ऑफिस जाता हूँ उस रास्ते से मैं रोज ना जाऊँ, थोड़ा सा चेंज करूँ रास्ता। जिस जगह पे मैं हमेशा जाता हूँ उस रास्ते पे मैं ना जाऊँ। जिस कैंटीन पे मैं हमेशा चाय पीता हूँ हमेशा दूसरी कैंटीन। Keep on exploring. It will slowly help you to go out of your head. And if you are हम्म regularly going out, and a lot of sometimes it happens that the outer game fixes your inner game also. It's not like that. कि हम्म outer game. मैं see, I'm by default I'm not an introvert. I am not an extrovert also. I am in between. मैं स्टूडेंट के साथ में होता हूँ तो भाई बहुत कम बात करता हूँ, पहले बहुत ज्यादा बात करता था। हम्म फिर मुझे समझ में आया कि ज्यादा बोलने से वैल्यू कम होती है, मार्केटिंग ब्रांडिंग वगैरह में ये सब चीजें आती है जो मैं बिजनेस कोच से सीख रहा हूँ। मैं दोस्तों के साथ में होता हूँ मैं बहुत बात करता हूँ, लेकिन मैं कुछ अलग लोगों के साथ में होता हूँ तो बहुत कम बात करता हूँ। तो यू प्ले अ रोल, मे बी when you talk with a woman you might be getting conscious. When you become conscious you come into that analytical and logical mode. तो ऐसा तो कभी नहीं होता इधर कि मैं अनसिज नॉर्मली रहता हूँ और मैं फ्री फ्लो के स्टेट में होता हूँ, तो Free ऐसा flow कभी is a ज्यादा हुआ right नहीं way. पर। See, I practice lot of free. I हम्म am getting near which person you are talking. Nothing bad about him, excellent person, amazing, best in world, best in India, best in Asia. Problem is now, like for some people, if their belief filters are very good, मेरे अंदर कचरा ही कचरा पड़ा है, इस बॉटल में कचरा ही है, और ये मैं डालूं हम्म तो गंदगी ही निकलेगी। इसमें अगर हम्म अमृत ही अमृत है तो अमृत डालूं, इसका फिल्टर क्या है, इसके अंदर क्या है, वो मैटर करता है। If my all हम्म previous experiences have been idiot and being stupid,
I will try and act in a way that is very weird, which is very screwing. So at that time, the Mm-hmm. same technique doesn't help me. Mm-hmm. Of course, you can experiment yourself with lot of things और बाकी चीजों के लिए हम personally बात करेंगे. But the one idea I would give you, never do the same thing. Always, every day, do something new which you haven't done. 5 questions से 5 question sheet. You're मैंने talking about openers, like how can I open to no. change my openers I'm not telling or you. change locations? The person you are learning now, he will teach you everything, the outer things. Coaches, Mm-hmm. अरे ब्रो पिकअप कोचेस होते हैं, 5-5 10-10 साल दिए उन्होंने जिंदगी के सड़क पे. Mm-hmm. तो what they have to Like climb outer he level, they had know 6 years it. of experience in PUA. और प्रॉब्लम तुम्हारा भी नहीं है ब्रो, मजले हुए खिलाड़ी होते हैं सब. मैंने इतना किया है, कोई नॉर्मल पर्सन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता हूँ. और कोई बोलेगा कि नहीं मैं महान हूँ, मैं महान नहीं हूँ. मैं आपसे भी नेक्स्ट लेवल हूँ. आई हैव एडवांटेज, आई हैव फैमिली सपोर्ट, आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स. मेरे घर पे चलता है ये सब. मेरे मम्मी डैडी को पता है मैं क्या सिखाता हूँ ये. So that doesn't mean that I'm superior or you're inferior. It's just because I have experimented myself. And the more you will experiment, but make sure one thing, when you are experimenting it, never make it mechanical. Mm-hmm. Never make it mechanical. The best thing I would like, read Creativity by Osho. It's one of the best book. भगवान रजनीश ओशो की फोटो लगी है यहाँ. It's, और Mm-hmm. मेरा इंस्टाग्राम है rebellious_राज. रिबेलियस जो नेम है वो रजनीश ओशो की किताब से ही लिया है मैंने. So it's Mm-hmm. very amazing. You have to be little rebel. Creativity by Osho is a good book because it teaches you can't be creative if you are like doing same thing. Creativity Mm-hmm. dies. Read that book. One is Creativity by Osho. Read and experiment with lot of small things. Smaller things will end the long run, but make sure daily you are doing something new. For example, Mm-hmm. if I'm wearing watch at this, I start wearing watch at this. If my passwords are like this, I need to change my password. Or you can try Jim Cubic program, or you can read Rewire Your Brain by Joe Dispenza. Good things are there. Mm-hmm. A lot of things are there. It will it will remove those things कि क्या बोलूं, कैसे बोलूं, क्या बोलूं, and like the logical mind will try to bypass that logical mind. बाकी Mm-hmm. मैसेज करो मुझे, बात करते हैं. Mm-hmm. अभी Like ऐसे मैं फ्री हूँ. mostly you do boot camp in Bangalore. Like आई दिल्ली डू में भी नहीं करते कैंप आप? इन बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, पुणे. आप कहाँ से हो? दिल्ली में, मैं दिल्ली से. दिल्ली is good man, but Delhi is यार too fuck up place man. Like lot of gamers are there, Mm-hmm. and Delhi people are, I don't know यार. Delhi people are very ballsy and rowdy. You are proper अब from Delhi, मतलब your genes and family is from Delhi. नो मैं हरियाणा से हूँ प्रॉपर. तो ब्रो आपके तो जीन्स में है, मैस्कुलिनिटी आपके जीन्स में है. I have been Haryana. I was in Haryana 2 years. I was in Haryana Isa. Sorry, 4 months, not 2 years, 4 months. Okay, bro. Message me. We'll talk. मुन्ना भाई को लेते हैं. सूर्यराज भाई को क्या कह रहे थे या आप? कुछ कह रहे थे आई थिंक. कॉल हाँ आ गया था मैसेज मेरा करो, बात लास्ट में करते कुछ कर. ठीक है. हैं. ओके, मुन्ना भाई को लेते डेफिनेटली हैं, ब्रो. फिर रेडमी नोट को लेते हैं. राज भाई, हाँ, राजीव मैं शर्मा. मैं मैं हाँ मैं 2 मिनट कुछ बोल लूं? हाँ बोलो. बोल बोल भाई. देखो एक्चुअली क्या है ना, मेरा एक नया पर्सपेक्टिव है जो मैंने थोड़े दिन पहले ही सोचा था. हम्म. मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ लड़कियों के लिए और सिर्फ गेम के लिए हम अपने ट्रॉमास को हील करने क्यों बैठ जाएं. मतलब कुछ लोग जिंदगी में सक्सेस को पाने के लिए, कुछ भी पाने के लिए ट्रॉमास पे काम करेंगे, जरूरी थोड़ी है ऐसे ही बहुत कुछ मिल सकता है. मेरा ये मानना है कि गर्ल्स आर जस्ट लाइक एनी अदर थिंग, जैसे पैसा या फेम या हैंडसमनेस या वगैरह वगैरह. तो अगर हमें सिर्फ गर्ल्स ही लेनी है तो क्यों ना हम सिर्फ लड़कियों से कंफर्टेबल हो जाएं. फॉर एग्जाम्पल, किसी के घर में अगर 2-3 बहनें हैं तो उसको कभी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगी अप्रोच एंजाइटी में, भले ही उसकी जिंदगी में बहुत ट्रॉमास हो. तो ये पर्सपेक्टिव कैसा लगता अच्छा पर्सपेक्टिव है. है ना? नथिंग बैड. अरे मेरा एक दोस्त है, ही इज नेचुरल, ही इज वेरी गुड. तो हम ट्रॉमास पे क्यों ही जाएं, हम कंफर्टेबल हो जाते हैं ना लड़कियों से समहाउ, उनके साथ बोल, घूमो फिरो. देखो कैसा होता है ना, जो तुम बोल रहे हो, इट मेक सेंस, ऑफ कोर्स इट मेक सेंस.
फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज टेलिंग मी अज्यूम शी ऑलरेडी लाइक्स यू, हम्म। वो मेरे बिलीफ में ही नहीं बैठ रहा है। हम्म। अरे कैसे लाइक करूं यार, इतने खूबसूरत मैं बूट कैंप में था और मेरे टीचर बोल रहा है ब्रो शी ऑलरेडी लाइक्स यू, गो। बोला देखा है उसको, ऐसे दूर दूर तक मेरे रिश्तेदार नहीं है। At that time my thinking was like that, I don't have any experience, valid experience, and like sometimes the assumption also doesn't work for some people. For Kaustubh, he doesn't go into technical things, he's like इतना सोचना नहीं पड़ता है यार, वो फटफट फटफट करना पड़ता है, उसके लिए काम करता है। मेरे लिए आई एम लाइक लॉजिकल, आई एम इंटेलेक्ट, समटाइम इंटेलेक्ट stops you. Some people need something, and of course if your point of view is that it's good point of view, what's wrong with that? तो वही मैं कह रहा था कि नेचुरल गेमर बनने पे फोकस होना चाहिए, ना कि ज्यादा टेक्निकलिटी सीखने पे, है ना? कोई नेचुरल नहीं होता है, even the natural sometime has come to all those things, they अच्छा। don't see. For example, I am learning business coaching, मेरे बहुत से दोस्त है। एक मेरा दोस्त है कृष्णा अग्रवाल, किड्स इंटरनेशनल स्कूल चला रहा है, एंड ही इज ही इज 10 times बेटर इन बिजनेस देन मी। ना उसने कभी जिंदगी में कोई बिजनेस किताब पढ़ी है, ना उसने कोई कोचिंग ली है, उनके जीन से आया है, उनके फैमिली से आया है, एंड उनका माइंडसेट वैसा है। आई नो लॉट ऑफ माय नेचुरल फ्रेंड्स हु हैव है गेम में पिकअप पिकअप सब कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता उनके। उनको लगता है कि एड़े एड़े लोगों की बातें हो रही है कुछ तो कुछ, इफ कोई नेचुरल दोस्त अगर आ भी गया गलती से, बिकॉज हम्म। फॉर देम इट हैज बीन अनकॉन्शियस। वन ऑफ माय फ्रेंड तेजस, ही उसकी 4 बड़ी बहनें थी, एंड ही वाज वेरी गुड विद वुमन, वेरी गुड, एंड ऑफ कोर्स वो हाँ, यही मैं कह अनकॉन्शियसली रहा था। फीडिंग द पूल, ये सब चीजें। बट अगर यही नहीं, मैं कह रहा था क्या कि करे, नहीं है तो फिर जिंदगी में रोते नहीं बैठ सकते ना। मुझे नहीं पता है वो, आई डोंट नो हाउ टू सेल। आई हैव दैट इशू रिगार्डिंग आस्किंग द मनी, दैट इज अ ह्यूज ब्लॉक फॉर मी। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं खानदान से आया हूँ डॉक्टर प्रोफेसर, मतलब प्रोफेसर लोगों के यहाँ पे selling is not something a good profession. Now I believe that selling is a noble profession. I have learned it. That was a mental issue. So I have to overcome it. If I am in marketing and वो एक issue है तो फिर तो problem ही है ना। If I am in the game and I have that issue, I have to fix it ना। हम्म। समझ रहे हो ओके, आप? थैंक यू। या course. हम्म। ओके, रेडमी नोट प्रो या फिर कोई और था चलो यार? भाई, अब पूछ ही लेते हैं। हाँ, रेडमी नोट प्रो, ये खरीदने वाला था मैं, हाँ, कुछ और खरीद लिया मैंने। कोई बात नहीं। अरे थैंक यू राजवीर, इतना बताने के लिए यार, काफी बताया अभी तक। मेरी आवाज साफ आ रही है ना? हाँ हाँ हाँ, अरे मेरे को ये पूछना था, जैसे आपने सेल्फ बिलीव के 4 चीजें बता दी ना, कि नॉलेज, एक्सपीरियंस और एटीट्यूड और स्किल सेट हो गया, ठीक है। हाँ इनर गेम के लिए सेल्फ बिलीव जो सेटअप करता है, तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे मान लो मैं गेम कर रहा हूँ रेगुलरली, ठीक है, और एक्सपीरियंस के लिए मैं क्या करूँ, उसमें ट्रॉमा हीलिंग का देख लूँ अपना। हाँ। जैसे कि चार एक्सपीरियंस, चीज है ना ट्रॉमा इस। हाँ हाँ। हाँ। मैं कह रहा हूँ जैसे चारों चीजें होगी, चारों चीजें सेट करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। एक तो स्किल सेट के लिए गेम करनी पड़ेगी रेगुलर, ठीक है, तो वो चीज सेट हो गई, पहली कल बात। कल कल और बात उसके करेंगे अपनी इस पे, चारों के लिए क्या क्या करना है कल बात करेंगे। है, अच्छा ठीक है, एक चीज बता दो, जैसे कि मान लो देखो, मैं अप्रोच करता हूँ, अभी तो नहीं कर रहा थोड़े दिन से। ये पुराना जो दिल्ली का दोस्त है, मेरा ही दोस्त है शिवम, मैं जानता हूँ उसे। तो मैं कह रहा हूँ जैसे कि मैंने 6 7 अप्रोच कर दी, वो दिक्कत नहीं होती, सही कर रहा हूँ, ठीक है, आराम से कर पा रहा हूँ, लेकिन 9 10 से फटती है, तो फिर क्या वो इनर गेम का प्रॉब्लम है मेरा? टू सम एक्सटेंड हो सकता है प्रॉब्लम, बट क्योंकि क्यों, ये बिलीव कोई गलत तो है नहीं। आपको थोड़ा हाँ सा क्योंकि उन, और ये स्टार्ट कब कब से गेम कर रहे हो? मैंने तो यार 1 महीना करी थी, मेरे उसमें सही रिजल्ट आ गए, तो उसके बाद मैं एक लड़के काफी लंबा चल गया, 6 महीना, फिर अभी भी 2 दिन पहले गेम करने गया था मैं, 3 4 दिन पहले। ये देखो यार, एक ऐसा है कि इफ यू ट्राई टू, इफ यू गॉट रिजल्ट, जैसे गेम करना शुरू कर दिया एंड थिंग्स आर लीडिंग, मेरे 1 महीने यू में विल 2 लर्न, पुल बन गए थे। मैंने करे हैं, पुल देन कर यू नहीं विल पाया मैं। लर्न, इट्स इजी फॉर यू, यू विल लर्न। हाँ। और जो तुम्हारा इशू है कि इफ द 9 सेंटेंसेस, हम्म। bro, I will give you example. It comes from a worthiness. हाँ, मैं यही बोलने वाला था, पता है, मैं आपको बताता हूँ एक चीज, मैं आपको पहले बताता हूँ। मैं अपने आप को फोन पर, मैं अगर अपने आप को नंबर करूँ, मैं 7.5 या 8 करूंगा, तो मैं किसी को देखता हूँ ना, तो अगर मैं नंबर देता हूँ तो मैं 8 तक कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी की गांड फाड़ देता हूँ।
हेड हो गए बात वाले पॉइंट पे हो तो मुझे दिक्कत नहीं है। अगर मेरे लेवल के आसपास उससे ऊपर होता ना तो मेरे को दिक्कत है। मैं हाँ अपने हाँ, आप को कम समझता हूँ, ये खराब होता है मेरा। जैसे जैसे एक्सपीरियंस आएगा, सी विथ हाँ। क्वालिटी कम्स अ क्वांटिटी, सॉरी सॉरी, हम्म। विथ क्वांटिटी कम्स क्वालिटी। हम्म। वंस वंस ब्रो, एक एक पर्सन था, 32 थर्ड his version never dated, never went on coffee। मैं बोलूं, और ही इज वेरी गुड लुकिंग, टॉलर देन मी, एंड मैं बोलूं जाओ इस लड़की से बात करें, लाइक ब्रो यार मेरे को इतनी पसंद नहीं आई। मैंने बोला अगर तू 10 मिनट भी कन्वर्सेशन होल्ड कर पाया ना इसके साथ में, हम्म। तो मान जाऊंगा तेरे को। ब्रो गया, ओपन करते हुए हम्म। बंदी इतनी इंटरेस्टेड हो गई, बिकॉज ऑफ कोर्स ही वाज अ वेरी गुड लुकिंग गाय। उसने तीन हम्म। चार बार हगा, क्वेश्चन पे क्वेश्चन डाले, एंड गर्ल गिव अ गुड चांस, और निकल गई लड़की। मतलब फॉरगेट अबाउट नाइन्स एंड टेंस ब्रो। तेरा तेरा ये अवस्था इस लड़की के लिए है। तू आधा घंटा अगर चलवा ले तो मैं मान जाऊं। हम्म। तो अभी बात ये है कि विथ वंस यू गो इनटू दैट, यू विल गेट यू विल गेट वन थिंग, इट्स लाइक इट बिकम्स कॉमन। मतलब आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम विथ लॉट ऑफ क्वांटिटी, यू योर क्वालिटी इंप्रूव्स। देयर इज नो एज सच ब्लॉक, बट ये जो है वर्दीनेस का, ये ब्लॉक रहेगा ही रहेगा। आई विल टेल यू, फॉर एग्जाम्पल, when I started coaching, I only हम्म। had 6 score, and I हम्म। was like, चलो कोचिंग कोचिंग करते हैं, as like, and no nines and tens and something, like I was like, so I was talking with a guy who was very good looking, and like I was like, ऐसा एक sales call रहता था, and I was to learn. So he asked me like, bro, what is your score? So I said, bro, 6। बोले कैसे कोच बन गया अभी तू, मेरा तो 22 है, वो भी एक भी कोल्ड अप्रोच की नहीं। इट हिटेड मी हार्ड, हम्म। एंड एज लाइक मेरा सिस्टम हिल गया। देन आई स्टार्टेड टॉकिंग विद माय कोच रिगार्डिंग लाइक, ब्रो सर ऐसा ऐसा हुआ, मेरे को लगता नहीं कि आई एम दैट क्रेडिबल इनफ टू टीच। ब्रो इट्स नॉट दैट यू आर नॉट क्रेडिबल इनफ, इट्स बिकॉज he was not the right person for you, of course। and it's like ये तेरे को नहीं है, मेरे को भी होता है। I earn 5 to 10 lakh rupees a month. If someone is like earning like 1 CR a year, I do get I do get such people। वो अचानक बोलते हैं हमारा 1 to CR, they are not right people। जो मेरा 1 to CR कमाने वाला कोच है, वो जब कर्टनी स्मिथ से मिला, विच अर्न्स लाइक 15 to 20 CR, वो खुद डिप्रेशन में चले गए। और कर्टनी स्मिथ जब ग्रैंड कार्ड से मिला, जिसका नेट वर्थ इनकम लाइक अराउंड लाइक 50 CR से 100 CR में है, वो खुद, it's always like that। the more you will rise na, the more you will rise, you will have that issue। if you are playing in a lower level of game, woman, sex and money, it's a lower level of game, and it's the game of competition। और उसमें आपको एनलाइटेंड होना है तो इट्स इम्पॉसिबल, नो मैटर हु दैट इज, एंड एनीवन हु इज क्लेमिंग इट इज बुलशिटिंग। उस पर तो कभी ट्रस्ट मत करना ब्रो। निचले स्तर के लोगों ने ऊपरी स्तर की बातें नहीं करना चाहिए, इनर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। ये तो आपको इशू रहेगा ही रहेगा। ये हमेशा रहेगा मतलब। टेंस, आप टेंस भी क्लोज करोगे। I know a lot हम्म। of, I know one of very good friend of mine, Pritam man, he has closed a lot, and he's definitely 10 times successful than me। वो बोलता हूँ प्रीतम भाई आप कोचिंग करो, वो बोलता है नहीं नहीं राज भाई आप ही हमारे गुरु। ही इज लाइक मैं ना आऊंगा और ना मैं सिखाऊंगा। और उनके एक बेस्ट फ्रेंड थे, शामन भाई बोलते हैं उनको। उन्होंने बोला कि शामन, इसको राज इसको बूट कैम्प करना है। मैंने बोला इसको कर, बोला तुम क्यों नहीं सिखा दो तू, अरे नहीं नहीं मैंने सिखाता हूँ मेरा अच्छा अच्छा। He's 10 times successful, then he will never come in that thing because he knows dark inside reality क्या तो फिर होता है। मुझे इसमें एक्सपीरियंशियल एक्सपीरियंशियल खेलना चाहिए ना, मतलब कि ज्यादा 9 10 में से अगर खेलूंगा तो फिर मेरे को नॉर्मल हो जाएगा चीज। जैसे कि मैंने एक हाँ दो कुछ सेट ओपन करे थे 9 10 वाले, मतलब नाइन्स करी थी जो हुक हो गए। उन्होंने खुद नंबर दिया मेरे को अपना, मतलब जेन्युइनली बोलो, ऐसे मॉडल देख बंदी और वो बालों से खेल रही है, मैं था सीपी में था मैं। तो वो ऐसे उसकी आंखें चितकड़ी गोरी चटकी बहुत बढ़िया बात था भाई। वो उसकी बात मतलब बहुत खुश होकर बात करती थी, मैं बता नहीं सकता। मैं तो मुझे खुद शौक गया कि क्या हो गया। तो एक्सपीरियंस लेना चाहिए दो रहेगा। तीन क्लोज हो जाने के बाद में बदल जाती है रियल, है ना, बदल जाएगी। वो नॉर्मल हो जाएगा मेरे लिए, है ना। फिर कि हाँ बहन से हो जाएगा, लड़की से क्या कर लेंगे मतलब। क्या ही होगा। ब्रो सी सी आई एम टेलिंग यू द हार्ड ट्रूथ,
ऐसा कुछ नहीं होता है नाइन सेंटेंस। हमारी जितनी हाँ, नंबर दुनिया वन है, तो। उस दुनिया के हम्म। दायरे में हमको जितने लोग दिख रहे हैं, वो हमारे लिए हम्म। नाइन सेंटेंस। मैं वर्धा में था, एक छोटा सा शहर था वर्धा। वहां पे दो तीन लड़कियां थी, उसमें की एक जो हम्म। ठीक दिखने वाली थी वही मेरे लिए नाइन सेंटेंस। फिर मैं प्रियदर्शनी में गया। वो प्रियदर्शनी पूरे कॉलेज में, नागपुर के इतना बड़ा कॉलेज, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट, उसमें से छह सात हम्म। लड़कियां, वो नाइन सेंटेंस। उसके बाद मैं पूना गया। पूना में ऐसा आजू बाजू काफी नेचुरल दोस्त थे जिनके पास में नाइन सेंटेंस उनकी गर्लफ्रेंड्स थी, और वो मेरी भी फ्रेंड्स थी। फिर मैं गेम में आया, गेम में जाने देखने लग गया, फिर मैं काफी अच्छे अच्छे गेमर से भी मिलता था। फिर मुझे लगा ये नाइन सेंटेंस है, एक्चुअली वो उसका अंत नहीं है। आपको रियलिटी बताओ, जो आप सोच रहे हो आपको भी नहीं पता नाइन सेंटेंस का है। नाइन सेंटेंस है ना, सो गई है कहीं नहीं है 8 बजे वो क्लब में नहीं, वो सो गई है, कहीं। 4 बजे बैठ के उठ के योगा करना है। नाइन सेंटेंस जो है ना, उसके हाँ। वो कहीं 1 मिलियन का कोई सेल्स कर रही है। वो नाइन सेंटेंस है ना, वो पेरिस फैशन वीक हम्म। में कहीं तैयारी कर रही है। वो कोई नाइन सेंटेंस है ना, वो किसी दुबई के यॉट पे, 6,000 करोड़ के यॉट पे घूम रही है। तो इट डिपेंड्स एंड इट्स नेवर एंडिंग लूप। सो डोंट थिंक दैट मच एंड डोंट बॉदर योरसेल्फ। इट विल हैपन एंड इट विल कीप ऑन हैपनिंग। तो ये प्रीतम भाई का भी वही हुआ ना, वो मेरे को बोल रहे थे यार आज ऐसा हो गया वैसा हो गया, नाइन सेंटेंस मैंने बोला इसके पहले फिर कौन थी? अरे वो कोई नाइन सेंटेंस नहीं थी। मैंने बोला क्या बात कर रहा हूँ, मेरे लिए तो थी ना। वो बोल रहे कि समझ गया। नहीं 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 भाई, ये तो कुछ नहीं थी, ये कुछ स्पेशल है। और मैं बहुत डिप्रेस हो गया, राज भाई आप फील करो। मैंने बोला मैं, मेरा इतना लेवल नहीं है भाई। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जरूर करना पड़ेगा। The guy is 10 times better than me, but still he's in the same, and he gets a lot of frustration because after all, that's a hard reality. You will get it. You will get it. Don't worry. Okay, How to guys. Sahish, overcome the feeling that something bad might happen. Munna and last Sahish. After that, we will close. Bro, question फिर से repeat कर दें. Sometimes there's this feeling that something bad might happen. Even though I have never had that experience, there's this fleeting feeling that even if Sometimes life the may, bad might happen. Has it ever happened to uh, you? no, but there's the feeling. कभी ना कभी I, तो होगा भाई। uh, uh, सच तो ये है, मुझे, मैं बोलता हूँ ऐसे, I signed up for a boot camp. Yeah, bro. I need to have important calls with you. I think कौस्तुभ ने पता नहीं इन्फॉर्म किया या नहीं, but we have to work on a lot of things. And I had a conversation with you. Kaustubh is there. Kaustubh, don't worry, he will be there if certain issue is there. And he is amazing. He has closed 9 sentences. So don't worry. Sorry. हाँ, bad might happen. Yeah, bro, it can happen sometime. वो तो बोलना पड़ता है रे, हमारा धंधा है ना। और नहीं होता था ना ब्रो। हैव यू अटेंडेड लैंडमार्क फोरम? या, आई हैव अटेंडेड लैंडमार्क फोरम। सब लेवल्स नहीं किए, एक ही लेवल किया। सो ब्रो, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ऐसा अगर कुछ नहीं होता था, आपको लगता था, फिर तो सभी करते थे ना। पर ऐसा भी नहीं है, होगा ही। आई नो लॉट ऑफ स्टूपिड एंड इडियटेड गाइस। एक बंदा है, मुझे रोज लगता है ये पीटेगा, ये पीटेगा, ये पीटेगा, ये पीटेगा, ये पीटेगा। डिपेंड्स ब्रो। आई डिडंट लाइक दैट मच लैंडमार्क फोरम, आई डिडंट लाइक दैट मच। ओके, ये पीटेगा पीटेगा, कहाँ आज तक नहीं पीटा? उसको वर्स्ट रिजेक्शन मिला है, प्लीज लीव। ऐसा भी होता है। सो डोंट थिंक दैट मच, अदरवाइज यू विल क्रिएट दैट एज अ रियलिटी। ओके। uh, okay, bro. हाँ, वो कभी कभी वो रियलिटी बन जाता है। कुछ नहीं Okay. होता है यार, बहुत ऐसे फालतू फालतू लोग देखे हैं मैंने, कुछ नहीं हुआ है। और बहुत से सॉर्टेड लोग देखे हैं, उनके साथ में वाहियात से वाहियात चीज होगी। होने को तो कुछ अच्छा. भी हो सकता है, होने को तो हाँ एक्सीडेंट भी हो जाता है वो। हाँ हाँ हाँ. ब्रो, मेरा ड्रिंक करने के बाद कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ है। होश में ही हुआ है दोनों बार। अच्छा. हाँ हाँ ओके, सो गाइस, हाँ. Okay. फॉर पर्सनल क्वेश्चंस वी विल लाइक हैव अ, एक मिनट यार, कौन है इसको? हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, सहीश भाई, वी विल टॉक पर्सनली।
ओके, लोअर हैंड, ठीक है, श्योर पूछ ब्रो लो। श्योर। कोई है नहीं तो आप ही पूछ लो। आप मुझसे बात कर रहे हो क्या? हाँ मुझसे बोल रहे हो राज हाँ भाई? हाँ, बोलो बोलो, कोई है नहीं तो हाँ आप ही। तो मैं लास्ट 6 मंथ से कोल्ड अप्रोच ट्राई कर रहा हूँ। मेरा इशू अप्रोच एंजाइटी है, तो मैंने फाइनली डिसाइड कर दिया कि कौस्तुभ से बूट कैम्प ले लूँ। तो मेरे को जानना है क्या ऐसा, व्हाट आर द थिंग्स दैट आई शुड कीप इन माइंड फॉर द बूट कैम्प? या ब्रो, उसके लिए इसलिए मैंने कौस्तुभ को बोला था, कौस्तुभ ने मुझे बताया था आपके बारे में। तो डोंट वरी, ही इज देयर एंड ही इज इन बैंगलोर। उसके लिए हम बैठेंगे अच्छे से, 3-4 घंटा 5-6 घंटा बैठेंगे जूम पे। लेट मी जस्ट पिन श्योर यू, ब्रो। पिन यू, क्योंकि कौस्तुभ भी बोल रहा था यार उसको एक बार देख ले, उसको मैसिव अप्रोच एंजाइटी है लग रहा है। मुझे लगता है मेरी तरह काम होगा आपको। मैं भी हिलता नहीं था, मुझे भी स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हो, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो मुझे। मैं हाँ 8-8 10-10 घंटे घूमता था, मेरे से ओपन ही नहीं होते थे स्टार्टिंग। हाँ हाँ, सेम सेम है, सेम सिचुएशन। बहुत ही मीन्स बहुत ही प्रेशर डालना पड़ता है अप्रोच करने के लिए। ठीक है ब्रो, करते हैं हाँ इसको। हाँ, ओके, श्योर श्योर, थैंक। चलो गाइस, हाँ विश एवरीवन वेरी हैप्पी दिवाली एंड एंजॉय, हैव अ गुड टाइम। स्टॉप रिकॉर्डिंग।